for the session. Got it. Let me check we are live or not. So those who have connected from Zoom as well as from YouTube, request you to please let me know, can you hear me out? If my audio video is clear, just write clear in the chat box. And if my audio video is clear, just write clear in a chat box. If my audio video is clear, just write clear in a chat box. The people those who have connected from a Zoom, यार आप गलत कर रहे हो. आप लोग वीडियोस ऑन नहीं कर रहे हो. ऐसा ना करो. हमें भी देखना है चार्टर्ड अकाउंटेंट की चेहरे की वो खुशी, वो स्माइल हमें भी देखनी है कि यार क्या खुशी होती है सीए बनने के बाद. आप दिखा दो यार. Come on guys, let's turn on the video so that we can have a good interactive session. जो वीडियोस ऑन करेगा उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज बाय द एंड ऑफ द सेशन, उसको एक स्पेशल सरप्राइज और गिफ्ट देंगे. ठीक है, तो फटाफट वीडियोस ऑन कर लो. यस, लेट्स, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. कुछ लोग बड़े टेंशन में बैठे हैं और कुछ लोग नींद से उठ के आए हैं, बोले सेशन इंपॉर्टेंट है, नींद सेकेंडरी है. राइट, so really happy to see this. Will this be available on YouTube? The answer is yes. YouTube से बता दीजिए please, मेरा audio video is clear. Just write clear in a chat box. Waiting for the confirmation of people. Right, and Zoom से जो connected है, if audio video is clear, just write clear in a chat box. Right, so that I can come to know that are you able to hear me out or not properly. अरे टेंशन ना लीजिए, all the problems are gonna be resolved. अगर कुछ दिक्कत आ रहा है सर, है ना, कि रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, whatever problem you're gonna facing, we'll be happy to ensure that that's gonna be resolved. अब वीडियो ऑन किया है तो उमंग भाई हमारे कनेक्टेड है, उनके पीछे लिखा है कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बड़ा अच्छा लगा यार देख के, दिल खुद गदगद हो गया आज मेरा देख के. उमंग भाई काफी अच्छा लगा. सीए उमंग भाई, ओहो हो गजब, दिल जीत लिया यार. यही चीज लिए तो मैंने वीडियो ऑन करवाई थी उमंग भाई. राइट, बाकियों को भी फटाफट रिक्वेस्ट है कि प्लीज टर्न ऑन द वीडियोस. इफ यू आर ट्रैवलिंग अदरवाइज इट्स ओके, इफ यू आर बाथरूम अदरवाइज इट्स ओके, इफ यू आर जस्ट सिटिंग एट योर होम लोकेशन, रिक्वेस्ट टू प्लीज टर्न ऑन द वीडियोस. Got it. क्लियर है सर, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है. अब तो हम एग्जाम भी क्लियर हो गए. टेल मी हाउ टू फिल द ICAI कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म. राइट, मेनी ऑफ यू मस्ट बी फाइटिंग फॉर दिस and many of you will be like, sir, this is most important for me, I need to be attentive. Got it, perfectly fine. Right, so before we start in the session, just wanted to check how many of you have visited the ICAI campus placement site. If you have visited, just write visited in a chat box. If you have visited the ICAI campus placement site website, just write visited in a chat box. Just wanted to see the number. Oh my God, few of them are saying not visited, sir. देखा है but अनदेखा है. अच्छा, कोई बात नहीं. Not visited, perfectly fine. We'll start from a scratch. I have registered for campus but the payment not deducted. अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, ये भी इशू को हम कवर करेंगे. सर पेमेंट कट गया तो क्या करना है? राइट, very important. Yes sir, visited. Few of them have visited it out. I want the session to be more interactive. तो जितना आप participate लोगे आपको उतना ही benefit होगा, because that is something which is there. So I'll request every one of you, the people those who are connected from Zoom as well as from YouTube, फटाफट अपने आंसर्स चैट बॉक्स में ड्रॉप करो. सर फ्यू पीपल आर आस्किंग कि कहां से हम कनेक्ट करेंगे इस जूम मीटिंग के लिए. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. May 22 CA, May 22 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आई शेयर द लिंक. जस्ट गो एंड ज्वाइन द मीटिंग लिंक. Got it, sir. Got it. Yes. Visited today morning only. Sir, visited some options were missing like city, big city orientation. Acha, got it. Don't worry. We'll be covering the same. Not visited. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आप सही जगह आए हो. पूरा जीरो से हम हीरो बना देंगे आपको, है ना? Got it. Got it. Perfectly fine. Someone is saying, sir, roll number has been already been showing at the time of registration. ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है. इसके लिए भी हम डिस्कस कर लेंगे इन द सेशन हाउ टू रिजॉल्व द सेम. यस, टेंशन ना लो, काफी लोगों का रोल नंबर का इशू आ रहा है. डोंट वरी, वी विल ट्राई टू एंश्योर दिस प्रॉब्लम इज रिजॉल्व. ओके, मैंने 23rd का सेशन किया था तो आज सेम है क्या? हाँ सर, फिल द फॉर्म पेंडिंग फॉर सबमिशन. ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट रिव्यू इट आउट एंड विल बी डिस्कसिंग द सेम. CV नॉट गेटिंग अपलोडेड. गॉट इट. सो हर एक चीज को हम डिस्कस कर लेंगे. Now, very important point. I want every one of you to pay attention on what all things I'm going to be telling you out. If you feel like, if you want to note it down, just note it down, because I don't want you to miss it out. Because बाद में क्या होता है कि सर क्या किया था बता दो please. You'll be having a YouTube live recording, so you can again check the same. But if you feel like, if you have doubts, just ensure that you put it over a chat box. We'll be happy to cover the same. ठीक है? Now, very important. Since all of you are chartered accountant, right, and it's really happy to meet you out. तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, वीडियोस ऑन करके एक जोरदार राउंड ऑफ अपलॉज फॉर योरसेल्फ. राइट, एक बार जोरदार तालियां यार. राइट,
I know that it has been 10-11 days, but whenever I meet, right, I have become so happy. मुझे काफी अच्छा लगता है और इसलिए मैं बोला कि यार एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है यार सभी के लिए, राइट? हेड्स ऑफ टू योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन. Now this also comes with lot of expectations. Becoming chartered accountant, few people says that कि सर सीए बन गए, वो easy लग रहा था. अब सीए की बाद वाली journey looks like it's a fight, it's a new journey, it's a competition race, right? So don't worry, I'm there always to help you out. Now very important, I am unable to register myself. Don't worry, keep your doubts. We'll be happy to help you out. है ना? तो after CA का journey, we are there to help you out. We are always there to ensure that all your problems get resolved, and that is why we are also having the session today. Now, the people, those who are connected today from this Zoom session and also from YouTube Live, I'll be going from a scratch of a ICAI campus placement website, and I'll be discussing all those things in detail. If you feel like if you have doubt, just use the chat box for the same. Now, I have presented my screen. If my screen is visible, you can just show thumbs up in a chat box, or you can ऐसे thumbs up आप दिखा सकते हो, so that I'll get to know that you are able to see my screen or not. If you're able to see my screen, just show the thumbs up. Perfectly fine. गोविंद ने बोला सर दिख रहा है, तो गोविंद ने बोल दिया, तब हम आगे जा रहे हैं, right? Others, if you can see, I will. अच्छा, got it. Now, very important, your favorite, my favorite, everyone's favorite, the website of Institute of Chartered Accountant, specially designed for the campus placement. Sir, कहाँ से जाना है इस website पे? I'll start from the scratch. ICAI campus placement. You just type it over Google. You'll get a first website, which is ICAI cmib.ici.org. cmib.ici.org. Got it? Now, after you go here, you will be able to find a lot of details which is related to the campus placement. First, you'll find the FAQs for candidates participating in the campus placement, announcement for the candidates, and some of the announcements for the organizations which is there. Okay, if you scroll it down, you'll again find the brochure of ICAI campus placement. So before I start, I would like to explain you that how this placement program works. Since I've been into this industry for almost 2.5 years, I know कैसे programs होते हैं, how the interviews are going to be conducted, what all challenges you face, right? What all are the solutions for the same, and how we are going to be ensuring that we get closer to our dream companies. Now, few important things which is there. Number one, the last date to register. Very important. Listen this carefully. Last date to register is 30th July, right? And if the people forget to register till 30th July, no one is going to be listening, and no one is going to be ensuring that you're registered on 1st of August. That means try to register before 30th July. Point number one. Point number two, many students is going to be facing a lot of issues. So do not wait for the last day. 30th July को fill मत करना, because बहुत traffic रहेगा website में. There are cases where students are trying to log in, but they are not able to create a login as well. Now they are in a situation कि सर क्या करूं? ठीक है? तो try to register after 2-3 days, or you can also start it today if you are able in a position to understand the same. ठीक है? तो plus do not wait for a last day, which is something I want to tell you out. Next. Sir, if my articleship has been completed by 31st of October, which is the case for the people those are for a first attempt, are eligible for the campus placements, and also before those who are articleship has been completed are also eligible for a campus placements out. The people, those who are for November 21 or November 21 cycle or December 21 cycle, they are also eligible for this, but they need to register as a preliminary registration. I'll tell them how they are supposed to register. Next, there are 9 big centers and there are few small centers which are there. We'll be discussing in detail which center to choose, how to choose, when to fill, when not to fill, every damn thing in detail. So request you to please pay attention, and if possible, you can also turn on your video so that I can see from your facial expression that आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं. Now, one thing I'm very dissatisfied with few chartered accountants is that they always try to hide themselves whenever they get an opportunity, or they are always pulling themselves back whenever they get an opportunity to prepare for interviews. You're going to be giving the interviews in a virtual environment, which has been mentioned here, right? You're going to be giving the interviews over a virtual environment. It has been mentioned over here. Now, whenever you are going to be joining any of the virtual platform, try to keep your videos on so that people at least know you. Right, and at least you can see that कि मैं वीडियो में कैसी दिखती हूँ, कि मैं स्मार्ट दिखती हूँ कि नहीं, right? So that is something is again very important, and that is also going to be making you user friendly with how to turn on the cameras, how to turn off the cameras, how to put yourself on mute, how to put on yourself on unmute, right? So ठीक है, it's their choice, it's your life. Again, I am the only to guide you out. Rest again, it's your choice. So next is the discussion on the centers part, which are the big centers, which are the small centers, which are there. We'll be again discussing on the same.
Next is the timeline, which is something I'll be discussing on very detail, that how this timelines are important for you, when you will be getting a shortlisting, when you are going to be sitting for the interviews out. That is something which I'll be covering. Next is the mock interview schedules, right? ICAI is doing a good initiative for so that they can help you out for the mock interviews, right? So I'll be again a part of one of the mock interview center which is there. Next, obtaining a membership, we'll be again discussing on this. What all documents I'll be needing, again we'll be discussing on this, and few guidelines which ICAI has given. Now, point number 2, the people those who have cleared in December 21 or before attempt in old syllabus are required to complete or at least register for their MCS. Okay, I will repeat, the people those who have completed their CA journey out or completed their CA journey from old syllabus, if they are not completed MCS, they are supposed to complete the MCS ASAP. Got it. Now, coming to the next part of our discussion, which is on understanding of our timelines. I hope my speed is okay. If you feel like if I'm speaking fast, then you can just write fast in a chat box. If it is okay, just write okay in a chat box. नहीं तो बाद में people are like, sir, आप बड़ा तेज बोल दिए. Yeah, sir, can you please speak at 2x speed? I can do this. Trust me. ठीक है. So I was also a student once upon a time. Still, I'm a student. Every day I learn something new from you guys as well. Perfectly fine. If my speed is good enough, okay. जब तेज लगेगा तो बोल देना इट्स गोइंग फास्ट. हाँ सर, मैं तो यूट्यूब पे देख रहा हूँ 1.5 पे. अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है ना. यस, गॉट इट. Let me discuss the timelines which are there relating to the placements, and after that is done, we'll be moving to ICAI campus placement filling form. YouTube की जनता, आप भी लिख दो यार, आप सब लिख नहीं रहे हो, ये गलत हो रहा है. Right, more than 250 people have connected on live YouTube, and more than 250 people are there on a Zoom. So almost 500 people watching it live. Really happy to see this. Just a second. I will try to present my screen, and if it is visible, just let me know. 500 plus chartered accountants. Great. That's what itself is something great. One of my earlier dream. Aja bhai, aja. Connect to the Microsoft Pro. Okay, just give me a second. Let me connect the wire. Okay, screen is visible. I hope my screen is visible. Got it? If my screen is visible. Now, very important. This timelines you need to understand before you sit and fill for the ICAI campus placements, so that I can ensure that you are 100% prepared for the placements as well. Now, let's understand this in detail. You know, first thing, there are 9 big centers which are Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Hyderabad, Jaipur, and Pune. These are the 9 bigger centers. Okay, 9 big centers. I'll mark this with green here. And there are some small centers which are this Bhopal, Dehradun, right? And all these are the smaller centers out. So I divide the entire session into the 2 parts. First, the small centers discussion, big centers discussion, and also the placement filling form. Okay. So one part of the session will be just covering the how to fill the placement form, and after that we'll be moving to the center selection, which is there. This is the most important part of the session. Okay. Now, sir, if you see this, the last date for a company's registration is 26th July, which is tomorrow. Not much relevant for you. Also, the company needs to register themselves. Say, for example, if ICICI Bank, Infosys wants to come to the campus placement, they also need to register, and they also need to pay some of the vitamin to the company, vitamin to the ICAI, which is money. ठीक है, पैसे के बिना थोड़ी आने देंगे, फ्री में थोड़ी हायरिंग करने देंगे उनको भी. तो they are asking some of the payments to the companies, which is this. ठीक है, तो आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ, पैसा देख के खुश हो सकते हो अगर होना है तो, कि आईसीआई को इतना पैसा मिलता है डे 1 पे लाने का. ठीक है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज मच मोर रिलेवेंट टू यू. नाउ let me make the timeline for you guys so that you can understand it, and I want you to also make this timeline, because बाद में क्या होता है कि after this is done you're like कि सर मेरा सिलेक्शन कब होगा, सर मेरी शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, राइट? एंड पीपल कंफ्यूज यू. जिसको पता नहीं होता है वो बेचारा इतना कंफ्यूज कर देता है कि I don't know why, but if you find this sort of people, just share the link of this channel and the videos to them. First thing, very important. Today, let me put the days, which is today. So today is 25th of July, 25th July 2022, right? After that is done, if you see this, right, it has mentioned that the last date to fill the campus placement form is 30th July. Website से उठाया मैंने कुछ नहीं बनाया. It's mentioned already in the website. The last date to fill the form is 38th
July 2022. Right, sir, whether I'm going to be waiting for a last date? The answer is no. Just try to fill it before the last date, because I've already told you out there might be some issues which is there. Now, during this time, you will be doing few things. Number one, you will be filling the form, and you will be also doing preparations for your interviews, which is inherent, right? And you also need to, you need to also prepare yourself for the interviews, which is there. Okay. Now, 30th July के बाद क्या होगा sir? Okay. After the 30th July is done, one important date for you guys is 8th and 9th of November. Sir, what does this date mean? Last date for online shortlisting by the organization. Since you are going to be filling the database, the companies are going to be getting a database on 2nd to 6th of August. ठीक है, कंपनीज को डेटाबेस मिलेगा जो आपने भरा होगा based on your interest, based on domain where you want to get into, right? The company will get a data on 2nd to 6th, which is there, not much relevant to you, relevant for the companies. But you will be able to see the consent. The consent, matlab you need to give approval to the companies on 8th/9th of August. Matlab here you will get to know that which companies have shortlisted you. Here you will get to know that which companies have shortlisted you. Okay, sir, how many companies will shortlist me, sir? How many companies will shortlist me? No one knows. Even God doesn't know this, right? Even God doesn't know this. Trust me, right? Either it can be 0, or it can be again 100, or it can be not this big range. But mostly what I've seen from experience is that mostly it goes around 2 to 30. Mostly. Okay, minimum 2 hoti hai, and mostly it goes around 30. It is purely dependent on how you fill the form, how your past experience have been, how your articleship has been, based on your work experience, and lot of things. Once I'll come to the ICAI campus placement form, we'll be discussing the same. Okay. प्लीज कम टू द फॉर्म. ठीक है, जिसको फॉर्म में आना है आप 10 मिनट बाद आना, आप वहां तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, आई नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच सो दैट पीपल अंडरस्टैंड इट. जिसको फॉर्म के सेक्शन में आना है, जस्ट ज्वाइन इट आफ्टर 10 मिनट्स, विल बी एबल टू. और आप स्क्रॉल डाउन कर लो, आगे बढ़ा लो टाइम को, यू विल बी एबल टू सी दिस. नाउ sir, here you need to give a consent to the companies which you are interested for. Sir, but to how many companies I can give a consent? You can give a consent to only 4 companies. Oh my God. Sir, imagine that 10 companies have shortlisted me. Can I give a consent to 10 of them? The answer is no. You can give a consent to only 4 of the companies. ठीक है, सिर्फ 4 ही लोगों को आप हाँ बोल सकते हो. Only 4 companies you can. Sir, but can I decide which all 10 companies should shortlist me? The answer is no. Companies decide you. You do not choose the company. Company आपको choose करती है, आप company को choose नहीं करते. समझ लीजिए इस बात को. ठीक है, company will shortlist you. You will not shortlist the company. Got it, sir? Sir, out of which, say for example, this 10 companies are there. So 10 companies shortlisted me, and I can choose any of the 4. I got it, sir. Sir, but why have they mentioned that the second round of shortlisting by the organization? Again, this is for the company. Now, what happens is that, say for example, when there's one of the candidate who got 10 companies out, he has given us shortlisting, or he has selected the 4 companies out. Now, there are 6 companies which are left, which are still looking for vacancies, right? There are 6 companies which are still looking for the vacancies. So they will shortlist few of the candidates, and you will be able to see on your portal on 12th of August. On 12th of August. Sir, ye kya samjha nahi, sir? Can you please explain in detail? Yes. Now, what happens is that ICAI gives you a chance to select the companies twice. Okay. Now, sir, can I choose 3 companies here? The answer is yes. Can I choose 2 companies? The answer is yes. Can I choose 1 company? The answer is yes. Can I choose 0 company? The answer is yes. Can I choose 5 companies? The answer is no. Maximum 4. Maximum 4, minimum 0. Okay, sir, if I choose 0 companies, that means I'll be getting a chance to choose 4 companies here. Again, the answer is yes. Sir, if I choose 1, I'll get a 3. If I choose 2, I'll get 2. If I choose 1, if I choose 3, I'll get 1. Okay, very simple, no rocket science. Matlab overall mila ke, in a first shortlisting and second shortlisting, you need to choose the 4 companies. The total of first shortlisting and second shortlisting should be 4. Sir, then how would I come to know that on my first shortlisting, how many companies I will choose? Point number 1. Point number 2, how will I come to know that which company will choose me on second shortlisting? No one knows. It's a risk. It's a game which you need to decide it based on the mentor, based on the people who you are connected with. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, right? Try to find out the people, those who can guide you out. So don't worry, I'll be also happy to help you out. I'll tell you how. Yes.
Now say for example, if you choose 3 companies, you will get an option to choose 1 companies out of the list which is there. Got it? Now give you example. एक example से समझाता हूँ so that you can understand this. Assume that on my first shortlisting, I got 5 companies. The companies are EY, KPMG, ICICI Bank, Deloitte, and Vedanta. Okay, just assume that. Okay. Now, out of which on the first shortlisting, I selected EY, KPMG, and ICICI Bank. Okay. On first shortlisting, I got EY, KPMG. मैंने सोचा कि हाँ मेरे को ये 3 कंपनीज में जाना है. Just assume that. No biasness. Explaining you so that you understand. ठीक है. Sir, I decided to go for EY, KPMG, and ICICI Bank. Okay, got it. Now इन दोनों कंपनी को indirectly you said that कि मैं अभी इंटरव्यू में नहीं बैठना चाहता इनके साथ. ठीक है. Sorted. Now in the second shortlisting, you will get some of the companies again. Sir, but are there chances that the company which I have rejected will again shortlist me? The answer is no. They will not shortlist you because एक बार आपने किसी को मना कर दिया तो वो दोबारा नहीं आती ना. बस ऐसी ही बात है. एक बार अगर आपने किसी को बोल दिया कि मैं तेरे पास नहीं आना चाहता तो मैं तेरे पास क्यों आने दूं, राइट? So that is something which is there which you need to understand this. है ना? कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई है, मतलब मैं समझ रहा हूँ इनके साथ जीवन में कुछ तो हुआ है कभी, राइट? इन्होंने लोगों को रिजेक्ट किया है और फॉर वॉट एवर रीजन, बट दैट इज व्हाट इज देयर. नाउ सर सेकंड शॉर्टलिस्ट में इमेजिन दैट आई गॉट 2 कंपनीज अगेन, व्हिच इज से फॉर एग्जांपल जेनपैक्ट, हीरो मोटोकॉर्प, ये मेरे को कंपनीज आई सेकंड शॉर्टलिस्ट में. इमेजिन. ओके, नाउ हाउ मेनी कंपनीज यू कैन शॉर्टलिस्ट? यू विल बी एबल ओनली टू शॉर्टलिस्ट 1 कंपनी. गॉट इट? Sir, are there chances that will I get no companies on a second shortlisting? The answer is yes, which can be there. Any permutation combination is possible. Okay, sir, but imagine कि मेरे को second shortlisting में एक भी कंपनी नहीं आई. ठीक है, एक भी कंपनी नहीं आई. सर मतलब कि मेरा तो एक का कोटा चला गया फ्री में. हाँ, ओ भाई साहब, है ना? ओ भाई साहब. सर बट मैं इसको फिर से कंसर्न नहीं दे सकता हूँ कि सेइंग दैट कि आप सेकंड शॉर्टलिस्टिंग में मुझे ले लो ना प्लीज, मेरे से गलती हो गई थी. नहीं होगा. ठीक है, ये गलती से गलती वाली गलती नहीं चलती है. ठीक है. नाउ अगेन अ रेड अलर्ट फॉर यू गाइस, व्हेनेवर यू आर गोना बी सिलेक्टिंग दिस कंपनीज, please ensure that you give a proper tick. Last time there was a issue in a system of ICAI जहां पे स्टूडेंट टिक कर रहा था बट वो टिक हो नहीं रहा था. ओके, एंड पीपल वर लाइक मैंने तो सिलेक्ट कर लिया है बिडू, अपने को कुछ नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके बैठा हूं. बट वंस दे सी द इंटरव्यू डेट्स, वो बोलते हैं सर मेरे को तो शॉर्टलिस्टिंग आई नहीं सर. ऐसा कैसे हो सकता है? Please go and check the ICAI portal again and again and ensure that there is a blue tick in front of the companies which you have shortlisted for. ठीक है, कंसेंट देख लेना. मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं, बाद में फिर यही होता है टेलीग्राम ग्रुप में कि सर क्या हो गया मेरे साथ, प्लीज मदद कर दो. मैं अभी से बता रहा हूं, रेड वार्निंग, ये होता है, होगा और आगे भी रहेगा. वार्निंग नंबर 1 फॉर यू गाइस. ठीक है, जब आप कंसेंट दोगे, एक बार नहीं बार बार जाके चेक करना. कितनी बार? एटलीस्ट 5 to 6 times. Just see till the time you will be able to see the blue tick on front of a name of a companies. Okay, I hope this is clear to all of you. If it is clear, just write clear in the chat box. If it is clear, just write clear in the chat box. If it is clear, just write clear in the chat box. I want 500 clear in the chat box. Right? I want all of you people from YouTube, people from Zoom, everyone should write clear. तभी मैं आगे बढ़ूंगा. I am waiting for all of you to write a clear. Because I do not want to face these issues out. I do not want you to miss the golden opportunities. If it is clear to you guys, just write clear in the chat box. Waiting for all of you to write. कुछ लोग लिख भी नहीं रहे हैं, बताओ. अरे लिख दो यार, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं यार, ऐसा मत करो. हमारे लिए मोटिवेशन है यार. ठीक है, आपको जॉब लगेगी, आप हमको दुआ दोगे, आप हमको पार्टी दोगे, हमको और क्या चाहिए यार. ठीक है, पार्टी भी मत देना, बस दुआ दे देना, बस और क्या चाहिए. राइट, गॉट इट. कोई कह रहा है कि सर आप पार्टी मांगो, जहां मांगो वो दे देंगे. सर जान मांगो, जान दे देंगे. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जान वान नहीं देना है बेटा, जान किसी और के लिए देना. ठीक है. सर कैन यू प्लीज रिपीट वंस? अरे रे रे रे, क्लियर 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 क्लियर. ठीक है, जिसको नहीं समझा थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके सुन लेना. आई एम वेटिंग फॉर द पीपल फ्रॉम यूट्यूब लाइव. यार यूट्यूब लाइव वाली जनता, आप लाइक भी कर दो यार, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए. 12,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट से 12,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक के वीडियो पहुंच जानी चाहिए. आज मजा आ जाएगा. एक सपना है, एक उम्मीद है यार, वो हासिल हो जाए तो बात ही कुछ और होगी. राइट, एक सपना है, एक उम्मीद है, अपने 2 भाइयों तक भी वीडियो पहुंचा दो. है ना, सर ने कुछ अच्छा बताया. गॉट इट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. 12th हो गया. नाउ आफ्टर दैट इज डन,
Your written tests are going to be starting from 16th, 17th and 18th depending on type of location you choose. ठीक है सर, whether company conducts the written test, the answer is yes. अब इधर एक चीज फनी है, राइट, जस्ट वन गुड थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू आउट. तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट इज गोना बी स्टार्टिंग ऑन 16th, 17th और 18th, right? 16th, 17th or 18th. Now a lot of companies call this written test by multiple names. Few company called it an aptitude test, few company might call it a technical test, few companies might call it a psychometric test. Okay, but point to be noted, my lord, is that it's a mixture of all three. Companies को भी नहीं पता होता, they say psychometric test, but at the end of the day conduct aptitude test. I don't know why. Psychometric test is far more different than compared to the technical test. Okay, so you should be aware of all this and at least start preparing for this, all this, because you never know opportunity कब कहाँ किधर कैसे it is gonna be knocking at your door. ठीक है, and everything involves a cost, right? अगर जहां पे आपको 12 लाख का पैकेज का ऑफर आया था, आपने इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया, आपने 10 लाख की जॉब में एक्सेप्ट किया, इट्स अ 2 लाख रुपीस का लॉस, विच इज 16,667 पर मंथ. ठीक है, तो आई डू नॉट वांट यू टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी आउट एंड दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग अ वेरी रिग्रेसिव सेशन टुडे. Got it, sir. So this is clear. After that is done, guys, and ICAI has planned something great for you guys, where they have asked कि we will also help you to prepare for mock interviews. है ना, we'll also help you out to prepare for a mock interviews, जहां पे the panel of experts are going to be coming. They'll ask you some series of question, either technical or non-technical, right? It's not compulsory, it's optional. मन है तो लो, नहीं है तो जय श्री राम. ठीक है, it's a optional thing. Okay, now good part is, one of the good news is that, sir, आप आओगे क्या मॉक इंटरव्यूज में? आंसर इज यस. आई विल बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द सेंटर ऑन मॉक इंटरव्यू, है ना. तो अगर लकीली आपका लक अच्छा रहा तो यू माइट सी मी टेकिंग योर मॉक इंटरव्यूज एज वेल. हुर्रे, ठीक है, ग्रेट. तो मॉक इंटरव्यूज आर आल्सो गोना बी प्लान्ड ऑन दिस डेज, मॉक इंटरव्यूज. Sir, one more thing you missed out, sir. Got it. I know what I've missed out. Few of you are saying that, okay, sir, ICAI has also planned our orientation session during this duration, right? Many of you must have got an email stating that कि orientation session has been planned by the ICAI. Physical, oh my god, sir, physical है, हाँ, right? तो बढ़िया से जाओ, free of cost है, right? Sir, but it is far from my city, sir. They have been calling to the bigger centers. Now again, you will get an email from ICAI that whether it is optional or whether it is mandatory. You'll get an email from the same. But sir, if it is optional, whether I should go or not, it's your choice. But I would say, if you go and meet new people out, because at the end of the day, chartered accountant is known for what? It's known for respect, it's known for network, it's known for all those things, which is, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, राइट? अगर किसी के भी फैमिली में इशू होता है ना, इनफैक्ट इफ एनीवन, आई डोंट नो, हैव विजिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और नॉट, राइट, तो होता कैसे, फॉर एग्जांपल किसी का कुछ इशू है ना, तो सबसे पहले किसको याद किया जाता है पता है? सीए को. अगर फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स भी है ना, तो सबसे पहले बोलते हैं सीए को फोन लगाते हैं, राइट? आई वांट यू टू बिल्ड योर मैक्सिमम नेटवर्क व्हिच इज पॉसिबल, एंड नेटवर्क इज समथिंग व्हिच वी आर ऑलवेज लैगिंग. आई डोंट नो व्हाई. अब ये मत बोलना कॉलेज लाइफ नहीं था, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी हम नहीं लेते हैं. ठीक है, तो दिस, ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड एंजॉय योर फ्री स्नैक्स, राइट? फ्री स्नैक्स भी मिलेगा, वहां पे लिखा तो था होपफुली, व्हिच मेल, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज चेक द सेम, है ना. आई होप गॉट इट. 5th अटेम्प्ट वालों को कोई रिक्रूट करता है क्या? अरे टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मेरे भाई. जब सीए का रिजल्ट देखा था तब थोड़ी लिखा था कि तुमको अटेम्प्ट लगा है, तब तो लिखा था यू आर पास, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. भाई जितना नॉलेज तुमको है उतना तुम्हारे दोस्त को भी है, सिर्फ फर्क इस बात का था कि तुमने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया है. समझ रहे हो? ये होता है एटीट्यूड, है ना. दिस इज व्हाट द एटीट्यूड इज. द टाइम यू ब्रिंग दिस एटीट्यूड, ट्रस्ट मी, यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ. गॉट इट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नो ईमेल फॉर द ओरिएंटेशन. ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज चेक योर स्पैम बॉक्स. स्पैम बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत लोगों को स्पैम बॉक्स में मिला है. अगर नहीं मिला है तो आई जस्ट ट्राई टू एंश्योर दैट आई शेयर ओवर अ टेलीग्राम ग्रुप. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, May 22 CA, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो. May 22 CA, है ना. May 22 CA is the link for the telegram group which have been created for the CA students out. जो Zoom पे कनेक्टेड है, मैंने फिर से आपके लिए चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है. सर, मॉक इंटरव्यू इज इन पर्सनल और वर्चुअल? द मॉक इंटरव्यूज आर वर्चुअल. मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया है. दोज हु हैव कनेक्टेड विद अस, request you to please join the same for all the updates related to the placements, training related to ICAI campus placements have been uploaded in this telegram group. Not got an email, don't worry, I'll try to share it over a WhatsApp group or over this telegram group.
and request you to please check the same. ठीक है? Now, moving to the next part, which is understanding of. I hope यहाँ तक के सभी को clear है. I have no doubts relating to all these things, right? If it is clear, please एक बार clear लिख दो ना. Please, if it is clear, so that I can move ahead. So otherwise, I need to ensure that the queries are also resolved. Because now I'll move to how to fill the campus placement form. If it is clear, just write clear in the chat box, please. लिख दो. Crystal clear. Oh ho. क्या बात है, crystal clear. I have a query. अच्छा, please put your query in the chat box. We'll be happy to cover it. I have a query. किसने बोला था I have a query? सर, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है बेटा? May 22 CA डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाई है यूट्यूब वीडियो पे, और ऑल्सो हैव शेयर्ड ऑन द पिन भी कर दिया मैंने. टोटली क्लियर, गॉट इट. सर, मेल कौन से प्रोसेस के बाद आता है? कौन से प्रोसेस? नहीं समझा मैं. ओरिएंटेशन इज फॉर ऑल द रैंकर्स. नहीं, देखो, दो ओरिएंटेशन है. एक MDP है ना, विच इज इन IIM लखनऊ फॉर ऑल द इंडिया रैंकर्स. ठीक है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं करते, बट है तो है. ठीक है, रैंकर्स को थोड़ा सा प्रिविलेज दे रहे हैं, है ना. मेरी तरफ मत देखो, मेरा नहीं है इंस्टीट्यूट, है ना. सेकंड, जो CA स्टूडेंट्स है नॉर्मल, उनके लिए ओरिएंटेशन रखा गया है, विच इज अ फिजिकल लोकेशन विच इज देयर. सो आई डोंट थिंक वहां पे कोई चार्जेस है. इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एनी एक्स्ट्रा चार्जेस दैट वी हैव टू पे फॉर मॉक इंटरव्यूज? आंसर इज नो. ICAI कैंपस प्लेसमेंट में मॉक इंटरव्यूज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, हाँ. Next, moving to the next part of our discussion. Now I'll come to your favorite website, which is ICAI campus placements. I'll come to your favorite website, ICAI campus placement website. ठीक है, I want 100% attention. जितना attention अभी तक के था उससे और 4 गुना बढ़ा दो. ठीक है. Now, here you will able to see all the announcements which are going to be coming in a future dates, right? Either it is a roster. So what is a roster? Roster is a list of companies which is going to be coming for or which has been shortlisted you for a date of interview. ठीक है, तो roster का भी यहाँ पे detail आ जाएगा. Which all companies are participating in ICAI campus, you'll be also able to get it, right? And every damn details are going to be updated on a latest news. Sir, next thing, campus placement. If you are newly qualified chartered accountant, there are 3 tabs. The first tab is for companies not relevant for you. Second tab is for a preliminary registration, the people those who cleared in December 21. ठीक है, जो December 21 में क्लियर हुए उनके लिए है. It's again for most of you will not be useful. The most simple useful tab is for you guys is for students. Okay, you need to go to the students tab. ठीक है, just see the process. अभी साथ साथ में मत करो, खिचड़ी हो जाएगा. Watch it after the session is done. Go to my YouTube, subscribe it. कर लो ना subscribe, क्यों शर्मा रहे हो चैनल को, है ना. Go to my channel, subscribe it, and open this video out and again check this in very detail. Got it? Now go to the student section. The time you go to student section, click on register here. Okay, the time you go to student section, just click on register here. Put your first name, middle name, last name, put your roll number. Oh my god, sir, मेरा roll number duplicate आ रहा है. ठीक है, I'll tell you. Sir, then put a student registration number, email ID which is there, your alternate email ID. Please put a email ID जिसमें email आता है. Point number 1. Check your email ID 5 times, 10 times, 15 times, 1000 times. Because मैंने देखा है कुछ लोगों को Gmail का भी स्पेलिंग नहीं आता. Literally I've seen this. And later on they are like, सर मुझे मेल नहीं आते ICAI के for the interviews. Because आपने Gmail को कुछ और ही लिख दिया था. GMIL कुछ तो I don't know what this people have written in few, and last time they were like, please help me. No one is going to be helping out, trust me. ठीक है, because basic है ना. Alternate email ID, password, confirm password. Sir, few of you are facing the issue this कि sir my roll number is going to be showing is already taken or duplicate. Sir, what I'm supposed to do, right? Now if you have already an account, click on login here, which is there. Again you'll move to this, but what is important is that just check this out and try to call on this helpline number between 2 to 5 only. मेरा helpline number नहीं है. These are 2 numbers. 0114 फोन में सेव करके रख लो ये नंबर. 01130111450. This is one helpline number. Second helpline number is 01130114091. ठीक है, just save this number out and call between 2 to 5 only, है ना, and only on a weekdays. And also request you to please drop an email for this, है ना. Please take a screenshot and drop the email on this. ठीक है, so that is something which I would like you to do this, है ना. But so sorry, there is one ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए थी. I'm dissatisfied with this. If you read this line, for a technical error, please send the screenshot on this. Mail received after first 1 a.m.
ऑफ 6 February 2020 विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने. तो दे हैव नॉट अपडेटेड देयर वेबसाइट, दैट इज व्हाट इज देयर, बट इग्नोर दिस, है ना. गलतियां होती है, इंसान से होती है, राइट, बट बहुत सारी है गलतियां यहाँ पे, बट कुछ नहीं कर सकते. लेट्स नॉट फाइंड आउट दिस, है ना. दो चीजें, बाल की खाल निकालो या काम से काम रखो. ठीक है. अब कुछ बच्चे होंगे ऐसा कैसे लिख दिया, अरे भाई लिख दिया, छोड़ो ना यार. फोकस ऑन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, फोकस ऑन योर जॉब्स. ठीक है. तो बाल की खाल नहीं निकालना है. लेट्स इग्नोर दिस, एवरीवन इन दिस अर्थ कैन डू मिस्टेक, है ना. तो भूल जाओ, मतलब अगर 100 मार्क का पेपर था तो भूल जाओ 100 में उनको 40 आए, है ना. दैट इज व्हिच इज देयर, और पास है. ठीक है. तो उस चीज का आप टेंशन मत लो. 40 ही चाहिए ना, 50, सॉरी. टोटल एग्रीगेट 50. गॉट इट. नाउ आफ्टर यू मेक एन अकाउंट, what I'll be doing is that I'll be using one of my students account which is there, and so please ignore it if you see the name. He has given me with a good intention and motive. I'll try to hide his identity as well to the fullest. Okay. Just a second, let me try this out. We'll tell you with another email ID. Just give me a second. Let me just check this. So once you register here, right? Once you register here, you will be able to see the screen. And this home screen is going to be visible to you, which is there. Few of the details which have been noted down, and the guidelines which I have already mentioned. Interview will be between 9 to 6, right? Virtual mein hoga and all this. They have also not updated the details here. Articleship is completed after 30th April or this. It should have been October. Ignore this. They have just copy pasted the previous placements ka thing. Ignore that. Now coming to the main part, which is the profile section which you are supposed to use. Just go to the profile section. Very important. The time you go to profile section, you will find some of the important details. Okay. Now side by side मत करो, please देख लो, because बाद में आप गलत कर देते हो, फिर बोलते हो सर ऐसा कैसे हो गया, है ना. So you will be again allocated your own center code which is there with the roll number out. You will need to pay a 500 rupees, not to me, to Institute of Chartered Accountants. Point number noted. Point number 2 to be noted is that many a times once you make a payment, आपका payment हुआ नहीं हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, and it is like your system will show that payment received or not received. You're not going to be getting any details. ठीक है. बहुत बार ऐसा होता है. I'll tell you the solution for the same as well. ठीक है. आपका पैसा कट जाएगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने फॉर्म भर दिया या पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय ICAI or not. ठीक है. देन यू विल डू वन मोर टाइम पेमेंट. ठीक है. देन अगेन यू विल लाइक समझ में नहीं आया फिर से. तो आई विल टेल यू व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस. Next, online shortlisting. ये सब details have been mentioned. Few FAQs which have been there, right? If you want to read it out, just read it out. How to select a center and some basic details. There are big centers I've already covered. There are small centers I've already covered. While registering for the campus placement form, if candidates could not fill the entire form at one time, can you do this? The answer is yes. They can save and move ahead. While registering for campus placement form, is candidate due, है ना? Candidate due to mistake his or her wrong email ID. पहला बात तो करना ही नहीं है. ठीक है. तो that is which is there. And if candidate is not selected for a bigger center, will the candidate given a fresh chance to select for the companies for this? So they have mentioned this out. You will be getting some chances out. So if the candidate opt only the bigger centers and this, so again request you to fill both the centers out. We'll be discussing on the detail. So you'll be able to see some of the details out. You'll be able to see the job description of the company. You'll be able to see the CTC. Now the one good part about the ICAI, good or bad, I don't know, right? But you will be already told the CTC of a company before you are gonna be selecting the companies on 8th or 9th of August. मतलब आपके पास पता होगा कौन से रोल के लिए हायर कर रहे हैं. You'll get to know that what is the CTC of the company. You'll get to know that how many candidates they are hiring. Every damn thing is gonna be told to you, right? What are the criteria of shortlisting? They've just mentioned this out: completion of articleship training and all this. And the companies can call 10 times of candidates. Say for example, if I want to hire 10 candidates, I'll call 100 candidates for an interview. That is what they have written. ठीक है. What if the second round of the campus on all this? ठीक है, ignore it. है ना, ये भी ठीक है. I'm just ignoring the. You can just read it out whenever you feel like. Are the candidates required to attend all the interviews which have given the consent? The answer is yes. Are the facilities that are provided by the candidates in future, all the details have been given. Now coming to the next part. ठीक है. Payment is not acceptable in cash, and payment देखो यहाँ पे लिखा है. If the payment for online registration of campus placement is made twice by any candidate, more than one successful are made. Additional payment would be refunded to the candidate in the month of June 2022. Purana hai, right? I don't know. They'll update the new dates when, but that is what they have mentioned now. After you are done with this, you need to click on submit. You need to take this undertaking.
ठीक है, कि आई एम इन अ जेन्युइन नीड ऑफ अ जॉब, आई अंडरटेक दैट, आई विल सिलेक्ट द कंपनीज फॉर विच आई एम रियली इंटरेस्टेड इन, एंड आई अंडरटेक दैट आई वुड कंट्रीब्यूट टू द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. द टाइम यू क्लिक ऑन सबमिट, आपका ये फॉर्म चालू हो जाएगा. यू विल बी एबल टू फिल दिस फॉर्म इन अ बेटर मैनर. ठीक है, यू विल बी एबल टू फिल दिस फॉर्म इन अ बेटर मैनर. तो अभी मैं इस पे नहीं कर रहा हूँ. आई यूज द डिफरेंट लॉग इन सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस आउट. Let me try with my own login if it is possible. If yes, then I'll able to check it out. If no, then uh, just a second. Mm-mm. Got it. Let me try with the login which is there with me now. Once that is done, you will be able to see the profile section. Sir, कैसा दिखेगा? Right? This is how the profile section is gonna be. And this is how the profile section is gonna be. Okay. So you'll be able to see some of the details which is related to the personal details, educational details, training details, work-ex, hobbies, job preference, available venues, and declaration. Most important is with center to choose. I'll cover this in just next 10 to 15 odd minutes. I want every one of you to be attentive. Now, some basic details I don't feel like giving a guidance. मेल हो के फीमेल हो ये तो आप ही को डिसाइड करना है. मतलब डिसाइड क्या करना है, मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड है ना. मैरिटल स्टेटस यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट. मैरिड हो कि सिंगल हो. योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, एड्रेस 1. इफ इट इज करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जो करेंट एड्रेस है वो. इफ इट इज परमानेंट एड्रेस जस्ट सिलेक्ट द परमानेंट एड्रेस. नो रॉकेट साइंस. ठीक है. नाउ मूविंग टू द एजुकेशन डिटेल्स. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जस्ट सिलेक्ट द स्टेटस. रेगुलर है कि आपका करस्पॉन्डेंस था. एजुकेशन 10th यूनिवर्सिटी प्लीज पुट इट आउट. Years of passing and a percentage in marks, rank. Simple. If it is there, put it down. No rocket science. So will I need this detail? The answer is yes. I hope you have prepared your resume and included all those details in your resume. If not, please do the same. Next, your 12th education, which is higher secondary. Again, status, board, university, year, marks, percentage, medal. Next, this is interesting. If you're pursuing any graduation or if you've pursued this out, graduation, you can select the list out of the same. कि जो भी आपने किया है, BA, BBA, BCom. People do BCom with CA. Just select the university, right? Sir, I have not updated to ICAI that I have done BCom. You are not supposed to fill this then. Okay. I hope people got the answer. जो भी university था, put a university, year, marks, and this, and also select the course type which is there. Okay. Sir, if you have done a post graduation, right, you can select the post graduation out of the list which is there. If you have done MCom, you can just select this out. You can put the years, and if it is there, you can just also put it down. Okay. Very simple. No rocket science. नेक्स्ट सर योर फाउंडेशन डिटेल्स. ओ माय गॉड, फाउंडेशन सीपीटी बचपन में दिया था. गोले गोले बनाए होंगे आपने. नेगेटिव मार्किंग था. आई होप हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन गिवन सीपीटी. सो सिलेक्ट दिस आउट. सीपीटी आईसीआई. क्लिक द मंथ ऑफ पासिंग. आई होप इसमें तो कोई ग्रुप का दिक्कत नहीं है, राइट? आइदर इट्स जून और मे, जून और दिसंबर. जस्ट सिलेक्ट इट आउट. पास, पुट द ईयर आउट, पुट द मार्क्स, एंड इफ रैंक एंड मेडल जस्ट पुट इट आउट. इफ इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट, क्लिक ऑन फर्स्ट. इफ इट इज सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट, क्लिक ऑन सब्सिक्वेंट. नो रॉकेट साइंस. ठीक है, यहाँ पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. Now, very important, foundation में I don't think so there is a issue in counting the number of attempts, right? How many attempts you have taken in a foundation? Just put it down. Now, sir, question is how to count the number of attempts. How many of you feel this? This is a doubt for you guys. How many of you feel this कि sir मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे कितने attempt लगे. कोई गिन के बता दे तो मजा आ जाएगा सर. If you feel this out, just write yes in a chat box. अच्छा, only the people with the first attempt are like ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा first attempt था, मेरे को क्या गिनना, right? ठीक है, you are smart guys. How many of you feel this is an issue? अगर ज्यादा लोग बोलेंगे, right, तो ही मैं बताऊंगा. If 2-3 people will say yes, I'll not tell. Right? I want to see how many of you feel this is an issue for you guys. How many of you feel this? If you feel this, just write yes in a chat box. Looking for yes in a chat box. मोहन अग्रवाल ने सबसे पहले YouTube लाइव में बोला yes. दिव्या ने बोला yes. Okay. अंकित ने बोला yes. राधिका ने बोला yes. नमन ने भी बोल दिया yes. ठीक है. Right? So a lot of people are saying yes. Few people are like, sir, I don't have an issue. I'm a topper, sir. Acha, great. You're a topper. Congratulations. You can give me a party anytime. But I want to help all the people out. बता दीजिए. बिल्कुल बताऊंगा. बिल्कुल बताऊंगा. Very important. मैं अपना opinion नहीं बता रहा हूँ. I'm telling you what student do. I'm telling you what ICAI says. है ना? अब आपको decide करना है how you count. Because if I ask a student, मैं अगर यहाँ पे किसी को unmute करके पूछूंगा, ये बोलेगा कि मैं जितना कम हो सके सर उतना कम attempt गिनूंगा. ठीक है. और आई once upon a time I asked one of the student कि तेरे को कितने अटेम्प्ट लगे. ही इज लाइक सर फर्स्ट अटेम्प्ट लगे. मैं पूछा क्यों? तो बोला पहली बारी तो मेहनत की थी सर, 3-4 बार एग्जाम दी बट मेहनत करके नहीं दी थी. तो मेरे तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही, मैं बोलता हूँ लोगों को कोई पूछता है तो, अरे मेरे भगवान
राइट? हाउ कैन यू काउंट इन दिस वे? अगर ऐसा रहता तो पूरी दुनिया बोलती वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई है, राइट? So let's be honest, let's be loyal to this, because there are chances that company, if come to know that you are lying anything, they will start blacklisting you. Oh my god, ये क्या होता है? If they start blacklisting you, there are very high chances that कि आपको subsequent campus placements में भी बैठने नहीं मिलेगा, and you they might ask you a penalty of 5,000 rupees, 5,000 रुपया. ठीक है सर, अब बता दो सर, हाउ टू गेन अकाउंट दिस, है ना? मम्मी ने पूछा था तो मैंने तो फर्स्ट बोल दिया था. ठीक है, कोई बात नहीं, मम्मी दीदी भाई जिसने भी पूछा था, बट लेट्स बी ऑनेस्ट. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटिंग ऑफ अटेम्प्ट एज पर आईसीआई? ठीक है, आई टेल एज पर आईसीआई फर्स्ट. एज पर आईसीआई इट सेज दैट एलिजिबल अटेम्प्ट्स आर काउंटेड एज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. आई रिपीट, जब जब आप एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए, वो आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाता है. ठीक है, नाउ अब स्टूडेंट को डाउट, सर व्हाट इज एलिजिबल अटेम्प्ट? Say for example, your attempt was due in May 19. You didn't sit for exam. That is counted as attempt as per ICAI, which is what they say. कहीं पे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है. सर क्यों नहीं लिखा हुआ है? अगर ये सब पॉलिसीज बनना चालू हो गई तो स्टूडेंट के पास will have a very good reasons to fight again, है ना? तो इसलिए नहीं लिखा हुआ है. Now let come to the what I feel. मुझे ये लगता है कि जब जब स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म भरा है उसको अटेम्प्ट गिन लेना चाहिए. ठीक है, इफ यू फिल्ड एग्जाम फॉर्म दैट मीन्स you have counted it as attempt. ठीक है, I'll repeat, जब जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, whenever you have filled the exam form, it is counted as attempt. सिंपल है, सॉर्टेड है, नॉट एन इशू. सर ऑप्ट आउट किया है तो क्या करें? इफ यू हैव ऑप्टेड इट आउट, आई थिंक यू कैन स्किप दैट अटेम्प्ट. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर आईसीआई क्या रिएक्शन होगा, बट आई फील व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, अगर मैं आपकी जगह रहता तो बिकॉज आई वांट टू बी लॉयल, आई नीड टू ऑनेस्ट, सर आई हैव ऑप्टेड इट आउट, कैन आई स्किप दिस अटेम्प्ट? द आंसर इज यस. ठीक है, बिकॉज आपका वो जेन्युइन रीजन था. ठीक है. Now again, definition of ICAI is far more different, but I feel like whenever I fill the ICAI campus placement form, that is counted as attempt. Now again, next question. Sir, मैंने फॉर्म भरा था, भरी थी, बट मैं एग्जाम में नहीं बैठी, अब इसको अटेम्प्ट गिने कि नहीं? I cannot fight. I told you what I feel, है ना? Again, you feel like कि सर मैं एग्जाम में बैठा, पास नहीं हुई तो अटेम्प्ट काउंट करना है कि नहीं? आपको जो करना है करिए. I told you what can be the right and perfect way, because इस पे मैं डिबेट नहीं कर सकता. This is very debatable topic. ठीक है. Sir, one thing I want to ask, January 21, November 21. ठीक है, November 21 and January 21. Once I'll come to the December, I'll just cover this out. So again, I'll repeat. Please do not worry about the attempts. Whenever you have filled the ICAI campus place, whenever you have filled the ICAI form for examination, that is counted as attempt according to me. होना चाहिए. कहीं definition लिखी है क्या? नहीं लिखी है. कोई guidelines है क्या? नहीं है. But if you ask someone from ICAI, they'll say eligible attempts is counted as attempt. ठीक है, दैट इज व्हाट इज देयर. सर वेदर दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब? द आंसर इज यस, अवेलेबल रहेगा ओनली टिल फ्यू डेज, उसके बाद हटा देंगे. ओके, नाउ मूविंग टू दिस फाउंडेशन का इज, आई डोंट थिंक सीपीटी का इज डिफिकल्टी इन काउंटिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. ठीक है, तो जब जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, यू कैन जस्ट फिल दिस आउट. इंटरमीडिएट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वांट अटेंशन अगेन. इंटरमीडिएट आईसीआई मंथ, ईयर, मार्क्स एंड मेडल. सर यहाँ पे कौन सा मंथ चूज करें? Which was the recent exam? Say for example, I gave, listen it out carefully, I gave my IPCC in November 2018 one group. Again, I'll repeat, November 2018 में first group clear हुआ, May 2019 में have cleared the second group. ठीक है, तो you'll put May 2019 here, the recent one. Okay, May 2019 यहाँ पे आएगा, and put the total marks out of 800 और 700 जो भी आपके केस में था. ठीक है, 800 और 700 पुट टोटल आउट ऑफ द सेम, है ना? मार्क्स इन क्या लिखा है? परसेंटेज. आई रिपीट अगेन, फ्यू पीपल राइट इन नंबर्स, प्लीज देखो लिखा क्या है, पढ़ के लिखो ना. परसेंटेज में बोल रहा है तो यू आर सपोज्ड टू पुट इन परसेंटेज गाइस, कम ऑन. ठीक है, आफ्टर दैट इज देन ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 वाज, ठीक है, तो लेट्स अज्यूम दैट माय ग्रुप इज नवंबर 2018 and it's 2019, so I'll put it as my first. If you have filled the form for both the groups in November 2018, but you cleared only second group, right? So it's my first attempt for group 2 and it's a subsequent attempt for a group 1. ठीक है, honestly यही होगा because already आपने May का भरा हुआ था form for a group 1 in November, and the group 1 का form you filled in November counted as second attempt, which is there because you already filled the form. But if you're appearing for the first time in a May 19, and if you filled the form for IPCC in November 2018, only once, दोनों फर्स्ट टाइम भरा है तो फर्स्ट आएगा अटेम्प्ट काउंट. सिंपल है, नो रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, यू कैन पुट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. नेक्स्ट, सीए फाइनल एग्जामिनेशन.
ICAI हैव गिवन दिस आउट बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इट्स रिटन May 2022 मार्क्स एंड दिस. नेक्स्ट अगेन सेम फॉर दिस, है ना, November 18 जो भी आपका पास आउट था, पुट फर्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर, दैट्स इट. एंड इफ यू आर डूइंग सम ऑफ द एडिशनल कोर्स लाइक CFA, CPA एंड ऑल दोस थिंग्स आउट, डेफिनेटली यू कैन पुट इट ओवर दिस, है ना, डेफिनेटली यू कैन एड दिस हियर. गॉट इट, है ना. यहां तक के किस किस को समझ में आ गया बेसिक डिटेल्स? आई होप इट इज क्लियर, है ना. जिन जिन को क्लियर हो गया है एक बार फिर से क्लियर लिख दो, राइट, सो दैट आई कैन मूव हेड. आई डू नॉट वांट यू टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा ना होना चाहिए कि आप छूट गए हो पीछे. ठीक है, जो YouTube से कनेक्टेड है यार, आप तो लाइक प्रेस करके क्लियर बोल दो. आपको आज मेरे को 350 लाइक लोग कनेक्टेड यार, 350 लाइक चाहिए पहले तो आज. इतना तो मैं मांग सकता हूं आपसे, इतना मैं मांग सकता हूं आपसे, इतना मैं मांग सकता हूं आपसे आज तो. सर इफ मेंबरशिप आईडी इज नॉट शोन हाउ टू फिल द फॉर्म, डोंट वरी, राइट. इतना मैं मांग सकता हूं, एक बार लाइक प्रेस कर दो यार आज, आज लाइक प्रेस कर दो यार. गजब क्लियर. कोई कह रहा है सर लाइक प्रेस करके आ गया, जूम वाली जनता बोल दी कि सर मैं तो यूट्यूब पे जाके लाइक प्रेस करके आऊंगा सर. हा, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. ओके, काउंटिंग अटेम्प्ट काउंट में क्या डालेंगे? अच्छा, अटेम्प्ट काउंटिंग मैंने समझा दिया है. सर प्लीज हेल्प इंटर अटेम्प्ट काउंट ऑल्सो, सेम इंटर अटेम्प्ट काउंट ऑल्सो सेम, नेहा सेम लाइन. जनवरी अटेम्प्ट नॉट शोइंग, ठीक है, तो जनवरी अटेम्प्ट नॉट शोइंग तो दिसंबर आप डाल दो. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. 10 लाइक्स, हा, राइट, किसी ने 10 लाइक प्रेस कर दिया, गजब. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग डिटेल्स. नाउ सर MCS completed, yes, put a certificate number for a GMCS, right, put a certificate number for GMCS. सर अब ये कहाँ से मिलेगा? बड़ी दिक्कत है सर, ये कहाँ से मिलेगा मुझे बताओ. ठीक है, तो I'll tell you where you will be able to get this out. I'll send you the link also, just give me a second, I'll stop this sharing and I'll give you the link of where you will be able to find this out, है ना. GMCS ICAI, got it. Now very interesting, right, I don't know how many of you have created the account here, but आपको यहाँ पे ये डिटेल्स मिल जाएगा, राइट. जस्ट राइट GMCS ICAI लॉगिन, वंस यू गो हियर, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा. जस्ट पुट योर लॉगिन डिटेल्स, URL, password. Sir, if you forget the password, click on forget password. Sir, please can you share this link on a chat box? The answer is yes, I'll share this link over a chat box. I will share this link over a chat box. I want every one of you to copy the same. ठीक है सर, जूम वालों के लिए तो आपने डाल दी चैट पे, यस डाल दी मैंने. यूट्यूब लाइव वालों के लिए भी अब मैं लाइव चैट पे जाके डाल के आता हूँ. यूट्यूब लाइव वालों के लिए भी मैंने लाइव चैट पे डाल के आ गई है, पिन कर दी है इस लिंक को. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू अगेन आवर ICAI कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म, जहां पे हम थे वहीं पे हम आ जाते हैं. गॉट इट, जस्ट लेट मी चेक व्हिच टैब वी वर इनटू. हाँ, यहाँ पे थे हम, राइट. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज दिस, है ना. GMCS सर्टिफिकेट नंबर इज इंपॉर्टेंट, आंसर यस. सर मेरा कंप्लीट नहीं है तो क्या भाई, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आउट, गिवन अ वार्निंग. अगर नहीं है तो आज जाके जहां मिलता है दुनिया के किसी भी कोने में, विच एवर पार्ट ऑफ इंडिया, जस्ट ट्राई टू एनरोल योरसेल्फ एंड पुट अ एनरोलमेंट नंबर. ठीक है, नेक्स्ट सर वेरी इंपॉर्टेंट, डू आई नीड टू हैव अ मेंबरशिप? मेंबरशिप मैंडेटरी है क्या? द आंसर इज नो. सर ले लेना चाहिए क्या? द आंसर इज यस. भाई मेंबर बन जाओ यार, नाम के आगे CA लिखने का मजा ही कुछ और है बिडू, सच बता रहा हूँ, राइट. एंड यू विल आल्सो एबल टू अवेल लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ICAI व्हिच इज देयर. So if you do you have a membership, just write yes. If you have, put a membership number which is there. If you don't have a membership, click on no. They'll ask you the expected date of membership. कब तक लोगे मेरे बताओ मेरे दोस्त, है ना. They'll ask you the expected date. सर अगर expected date तक नहीं लिया तो क्या होगा? ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ले लेना. ठीक है, which is there, है ना. इट्स अ सिंबल ऑफ प्राइड, राइट. 4 लोग के सामने ऐसा मेंबरशिप कार्ड निकाल के दिखाओगे तो बोलेगा गजब, राइट. तो दैट इज व्हिच इज देयर. आफ्टर दैट इज देन यू आल्सो नीड टू साइन अ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग दैट आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, CA फाइनल एग्जामिनेशन, आर्टिकल्स कंप्लीशन, MCS डेट, MCS सर्टिफिकेट नंबर, एंड जस्ट क्लिक ऑन फाइनल अंडरटेकिंग एंड क्लिक ऑन सबमिट. ठीक है, आफ्टर दिस इज डन you need to move to the next tab. Very important, articleship training details. Articleship training details which you are supposed to fill in. Sir कौन सी फॉर्म से मेरा आर्टिकलशिप था, लोकेशन क्या था, ट्रेनिंग डेट टू ट्रेनिंग डेट. नाउ यहाँ पे I'll come to it later on, है ना. तो प्लीज ट्राई टू एंश्योर दैट यू आर गोना बी पुटिंग योर करेक्ट डेट्स आउट. ठीक है, आपका जो फॉर्म भरा था इनिशियली, राइट, आई होप यू रिमेंबर यू फिल्ड द ट्रेनिंग डिटेल फॉर्म. वो हार्ड फॉर्म होता था, वी नीड टू फिल द 3 कॉपीज ऑफ द सेम. Trying to pull this out. Put the number of partners. Oh my God, sir, I don't know how many partners are there. Call your HR in office. If you don't have HR, call your partner. ठीक है, call your partner. Sir,
पार्टनर फोन नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं, गो विद अ बॉक्स ऑफ स्वीट, उनको मिठाई खिलाओ, वो बरोबर से फोन उठाएंगे। ठीक है। नाउ राइट द नंबर ऑफ पार्टनर्स व्हिच वर देयर, नेचर ऑफ वर्क डन इन आर्टिकलशिप। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, राइट। जो ये सेशन बगैर देखे फॉर्म फिल करेगा ना, उनके साथ बहुत धोखा होने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिर ध्यान से देखो। राइट, अब होगा क्या, राइट, से फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज क्लिक्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, वो क्लिक करेगा और क्लोज हो जाएगा। ही विल फील लाइक आई कैन ओनली टिक वन। नो, यू कैन टिक मल्टीपल। वो सिस्टम में ग्लिच है। ठीक है, वो अपने आप बंद हो जाता है एक बार टिक करने के बाद। सर ऐसे कैसे? ऐसा ही है बेटा, मैंने नहीं बनाया, टेंशन मत लो। सर आपका कौन सा सिस्टम है? बेटा मेरा cmonk.com है, वो मेरी वेबसाइट है, वहां पे जाके देख लो जो भी चाहिए। नेक्स्ट, अदर एरियाज जो भी इफ यू वांट टू स्पेसिफाई यू कैन जस्ट स्पेसिफाई, राइट। अगर आपको secondment or exchange, मतलब if you have gone to some foreign countries out, that is something which you can go for. Next, give the company name for whom the assignments have been done. है आईसीआईसीआई किसे मांग रहा है? मांग रहा है सर, मैंने नहीं बनाया अगेन, राइट। तो जो भी आपने कंपनीज में काम किया है, जस्ट राइट डाउन देयर नेम्स, राइट, विच इज देयर। सर बट आई हैव वर्कड ऑन अ स्मॉल फर्म्स और स्मॉल क्लाइंट्स, उनके भी नाम लिख दूं? इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट डाउन। अब मोहनलाल और मोहनलाल पान वाला का ऑडिट किया होगा तो वो मत लिख देना, तो बहुत ज्यादा वो चीप लगेगा, है ना। मोहनलाल, रामलाल, श्यामलाल, दामलाल, है ना, तो वो सब मत लिखना प्लीज। थोड़ा से सोफिस्टिकेटेड नेम विच हैव सम बिग ब्रांड नेम्स, ट्राई टू राइट इट डाउन। सर कितने लिखे? नो रिस्ट्रिक्शन, जस्ट राइट इट डाउन बाय पुटिंग द कॉमा। ठीक है सर। नेक्स्ट, गिव अ इंडस्ट्री नेम फॉर हुम द असाइनमेंट्स आर बीन डन। इसमें कैसे लिखना है देखो, XYZ/सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो जस्ट लेट मी टेक एन एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल आपने CMONG का किया है, ठीक है, तो यू हैव गिवन द कंपनी नेम फॉर असाइनमेंट ऑफ द डन। गिव द इंडस्ट्री नेम। देखो अब सबसे पहले क्या लिखना है आपको? इंडस्ट्री नेम। सबसे पहले राइट CMONG/एजुकेशन एडटेक, है ना। तो यू कैन राइट एजुकेशन इंडस्ट्री, right, or you can write edtech space whichever is there. After that is done, you can put a comma and just write it down for the second industry. तो आपने second आपने लिखा से for example ABC, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे ABC, right? If it is in construction, you can write construction. If it is service, sir, you can write service. ठीक है, simple है, no rocket science. Next, sir, but I have taken a transfer. What I am supposed to do? Just click on plus icon, right? यहाँ पे जब से आप plus icon पे click करोगे, again one more tab is going to be added. Now, last time बहुत सारे students को one more issue they have faced was कि ट्रेनिंग डेट टू और फ्रॉम से वो डाल रहे थे, बट द सिस्टम वाज थ्रोइंग अ एरर। वंस यू आर क्लिकिंग ऑन सबमिट, सिस्टम वाज थ्रोइंग अ एरर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाद में दिक्कत आती है, आप लोग बहुत तंग करते हो या परेशान हो जाते हो, है ना, और फिर कुछ लोग रो देते हैं, सच बता रहा हूँ, आई हैव सीन दिस, है ना। तो क्या करना है, एक दो दिन आप आगे पीछे क्लोजिंग डेट का मूव कर देना, यू विल बी एबल टू गेट इट परफेक्ट। ठीक है, यू नीड टू एडजस्ट द ट्रेनिंग टू डेट। ओके, इफ इट इज इफ द सिस्टम इज थ्रोइंग एरर, क्यों करता है? बिकॉज इट काउंट्स द नंबर ऑफ डेज, वो पैरामीटर लगा हुआ है, अगर एक दो दिन आगे पीछे होता है तो दैट इज व्हाई इट जस्ट थ्रो द एरर। If you have taken a transfer and mentioned the name of a second firm which is there, training to from date, number of partners, work articleship which is there, and industrial training date, जहां पे भी आपने industrial training की है, that is something we are supposed to mention it out. ठीक है, ये this is important, one of the important parameter for shortlisting which I want you to understand. ठीक है, next, WorkX, very important. Now the people those who have डन अ वर्कएक्स, आइडियली सबका नहीं होगा, जिसका आर्टिकलशिप होगा उसका ही होगा। आर्टिकलशिप मतलब दिस इज अदर देन आर्टिकलशिप, ठीक है, वेर यू हैव गेटिंग सम ऑफ द ग्रॉस सैलरी, राइट, आई डोंट थिंक सो काफी लोगों का होगा, राइट, तो यू कैन जस्ट इग्नोर इट, जस्ट क्लिक ऑन नो। इफ यू हैव अ वर्कएक्स देन ओनली पुट इट, अदरवाइज नो। मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव इट। सर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इज नॉट काउंटेड एज वर्कएक्स, द आंसर इज नो, बिकॉज दे हैव गिवन अ सेपरेट टैब फॉर द ट्रेनिंग डिटेल्स। ठीक है, तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इज नॉट काउंटेड एज अ वर्कएक्स। सर ऐसा कैसे? मेरा सिस्टम नहीं है भाई। ठीक है, तो दैट इज देयर। नेक्स्ट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट विच यू आर सपोज्ड टू पुट इट डाउन। तो जो भी आपकी हॉबीज है, अचीवमेंट्स है, राइट, यू कैन जस्ट पुट इट डाउन। इफ यू हैव रिसीव्ड स्कॉलरशिप्स, जस्ट क्लिक ऑन यस, नो, देन नो। वॉन द डिबेट्स, यस, नो, यस, नो, right, some of the participation social media programs, that is something you are supposed to put into. Next, on any other means अगर आपने कोई award मिला है, some extra curricular which you want to highlight, just write it down here, extra curricular. I hope people must have this tab in their resume. नहीं है तो प्लीज डाल देना। ठीक है सर, सिखा देना प्लीज कैसे बनाते हैं resume, बस I'll tell you आप कैसे सीख सकते हो। नेक्स्ट, हॉबीज, राइट, अगेन यहाँ पे भी ग्लिच है सिस्टम में। सर एड मल्टीपल हॉबीज, एंटर, प्रेस एंटर एंड प्रेस एंटर की आफ्टर टाइपिंग द हॉबीज। से फॉर एग्जांपल आई एम गुड एट क्रिकेट, है ना, तो अगर मैं क्रिकेट लिखने में एंटर दबा रहा हूँ, ये ले नहीं रहा सिस्टम, आई डोंट नो व्हाई, इट्स अ सिस्टम एरर अगेन। तो कॉमा लिख के यू कैन जस्ट पुट इट आउट मल्टीपल हॉबीज।
अयो, ऐसा कैसा, ऐसा ही है बेटा, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कमिंग टू द लास्ट इंटरेस्टिंग टैब, जॉब प्रेफरेंसेस। कहाँ चाहिए? इफ यू वांट इन इंडिया, जस्ट राइट इट। इफ यू वांट आउटसाइड इंडिया, और इफ यू वांट एनीवेयर इन इंडिया, इट्स प्लस यस। प्रेफर्ड सिटी, नहीं सर मैं तो मुंबई की हूँ सर, मुझे मुंबई में ही रहना है, ठीक है, मुंबई सिलेक्ट कर दो, या राइट मुंबई है। Sir, will it impact my shortlisting? The answer is yes, because company only in particular location is gonna be shortlisting you. Got it. Sir, passport है तो click on yes. If you don't have a passport, click on no. Put your passport number. Whether transferable post acceptable, right? So you can just go for yes. Sir, have you participated in 1 month and 4 month residential program? I don't know how many of you are aware of. There is a program in Hyderabad which ICAI used to conduct. नहीं पता. How many of you know this? A residential program जो ICAI conduct करता है. How many of you know this? If you know this, just write no in the chat box. How many of you know this? Just write no in the chat box. शिवानी is like, मेरे को नहीं पता, कोई बात नहीं शिवानी, ठीक है, इग्नोर इट। अब तो क्या, अब तो सीए बन गया, अब पार्टी देने का टाइम है, अब ये सब तो ठीक है। आई थिंक फ्यू ऑफ यू नो दिस, फ्यू ऑफ यू डोंट नो दिस। नेक्स्ट, आर यू प्लेस्ड आउटसाइड इंडिया, आर यू रेडी टू प्लेस आउटसाइड इंडिया? जिन जिन का सपना होगा, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन यस एंड सिलेक्ट द एरियाज वेर यू आर इंटरेस्टेड इन टू। अगेन सेम सिस्टम ग्लिच, एक बार सिलेक्ट करोगे तो क्लोज हो जाएगा। यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल कंपनी, मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है, बट बार बार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ओपन करके, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस आउट, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मिस दिस, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनुअल सीटीसी, अयो अयो, एक्सपेक्टेड एनुअल सीटीसी सर मुझे डालना पड़ेगा, व्हाट इज योर एनुअल एक्सपेक्टेड सीटीसी, है ना। तो यू नीड टू डिसाइड हाउ मच इज योर एनुअल एक्सपेक्टेड सीटीसी। सर कैसे डिसाइड करें, आप बता दो, वो नंबर डाल देंगे, राइट। इट्स प्योरली डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, प्योरली डिपेंडिंग ऑन योर रैंक्स, बट आई विल हेल्प यू आउट विथ वन ऑफ द हिंट। मैं आंसर नहीं देता हूँ, मैं हिंट दूंगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, कितना लिखना है, ठीक है। Just will tell you in next 10 minutes. Okay. Next, preferred industry. Whichever industry you want to sit for a job, just click on yes. If you feel like nahi jana hai, to click on no, which is there. It's your choice. And based on this, again, the shortlisting is going to be done. Okay. So select the type of industry which is there. Preference for area of work, है ना, कि आपको DT में जाना है कि IDT में जाना है कि कौन से डोमेन में जाना है. If you're okay with all this, just write yes. If you're not okay with this, just click on no. You'll get an option to select four domain. ठीक है, I can select accounting. So for example, I select company law management. I select for costing. I select नहीं हुआ. I select for costing, and I select for general management. If I select the fifth one, it's not gonna be showing, है ना, वो दिखाएगा error. You cannot select more than 4. ठीक है, तो only 4 is allowed if you go for no, but if you go for yes, you can. सर व्हाट डू यू से, सर कितने करना चाहिए? इट्स योर चॉइस, है ना। अगर मैं रहता तो मैं यस करता। आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करो कि नहीं भाई मुझे यही डोमेन, यही इंडस्ट्री टारगेट करना है, तो यू कैन गो फॉर नो। सर कैटेगरी ST OBC, why this is relevant or general? Because lot of PSU have their category wise hiring. सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो बोला गया था सीए का कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं होता है, सिर्फ PSUs में रहता है। बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी से आप समझो, गवर्नमेंट कंपनी हैव देयर ओन नॉर्म्स, सो दे नीड टू एंश्योर दैट एंड केटर द सेम, दैट इज व्हाई दे हैव आस्क्ड फॉर द सेम, ठीक है। इफ यू आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जस्ट सिलेक्ट यस और नो, बट प्रोवाइडेड यू हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फॉर द सेम। बिकॉज विदाउट डॉक्यूमेंट्स का आपको रिजेक्ट कर देंगे, फिर बहुत बेइज्जती होती है, ट्रस्ट मी। इफ यू डोंट हैव अ डॉक्यूमेंटेशन, प्लीज एंश्योर दैट यू गेट योर डॉक्यूमेंटेशन सॉर्टेड बिफोर 8th और 9th ऑफ अगस्त, ठीक है। अगर नहीं है तो बना लो, बना लो मतलब सही अथॉरिटी से बनवा लो, बना लो मतलब नहीं भाई, मतलब बोले सर ने बोले बना लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अवेलेबल एरियाज और सेंटर्स वी कैन सेट फॉर। फर्स्ट, you need to select the bigger center out of the list of 9 centers. Oh my god, सर बताओ ना कौन सा सेंटर अच्छा है सर, है ना, ठीक है, मैं बताऊंगा, इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, सस्पेंस as a part of life, right? Second, there is a lot of smaller centers which you can choose for. If you don't want to go for a smaller center, you say that do not wish to set for a smaller center, but ideally mat karna, right? Let be open to the opportunities, because you never know कि कब कौन सी कंपनी कहाँ पे लोकेशन पे आ जाए। Next, center from where you want to attend the orientation program, right? I just told you out, it's just a small induction program where they will brief you out कि क्या सीए का जर्नी होता है and all this, है ना, what next after CA, they'll just guide you out, and I think followed by free dinner or lunch or snacks, whichever is there. अगर नहीं मिला तो मुझे मत देखना अगेन, है ना। तो सर ने तो वीडियो में बोला था खाना है, वहां जाके आप भिड़ गए 2 लोगों से, है ना, कि खाना किधर है बताओ, है ना। अब नहीं मिलेगा तो प्लीज, है ना। तो देयर आर लिस्ट ऑफ सेंटर्स विच इज देयर, यू नीड टू डिसाइड दिस आउट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन बी डिफरेंट। इफ यू चूज मुंबई, कैन यू चूज दिल्ली? द आंसर इज यस, इट्स नॉट एन इशू। वेरी इंपॉर्टेंट, अपलोड योर प्रोफेशनल फोटोग्राफ। आई रिपीट, प्रोफेशनल फोटोग्राफ, है ना, नो इंस्टाग्राम फोटोग्राफ्स आर अलाउड,
ठीक है. Next, very important, upload your CV. अयो CV नहीं बना सर, कैसे बनाऊं, टेंशन आ रहा है ना. तो I'll help you out how to make the CVs and all this. And next, available mock centers which are there. There are few mock centers which is there, so you can choose the mock center. And after you choose this, you need to choose the available slots. Once you click on available slots, it's gonna be helping you to choose the time. कौन से टाइम आप अवेलेबल रहोगे. देखो मतलब इंस्टीट्यूट हैव बीन रियली वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइस, है ना. तो दे हैव बीन ensuring that the dates and all the slots are for you guys. ठीक है, ये हो गया. और आफ्टर दैट इज देन यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. जब जब आप आगे बढ़ रहे हो, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, एंड देन यू विल मूव टू दी लास्ट पार्ट विच इज गीता बबीता की कसम, दैट इज डिक्लेरेशन. ठीक है, आपको कसम खानी पड़ेगी कि मैं जो करूंगा सच करूंगा, मैं इंटरव्यू में बैठूंगा, आई एम इन अ जेन्युइन नीड ऑफ अ जॉब, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन कंपनी एंड ऑल दिस थिंग्स आउट. आफ्टर दैट इज देन click here to preview your profile. आपका एक profile is going to be showed in a PDF format, and after that is then you need to make a payment of 500 rupees. Okay, now very important, before you make a payment, ensure that आपके browser history clear हो, cookies clear हो, Google Chrome में इतने सारे tabs ना खुले हो मेरे जैसे, है ना. If you do the same, payment fail हो जाएगा, फिर आप मेरे पास आओगे, फिर मेरे को बोलोगे सर ऐसा कैसे, right? Please ensure that you are gonna be making it perfect. ठीक है. Now there are multiple cases that for the payment failures and stuff, I'll update you कि कब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका profile form has been filled. That is one thing which I'll guide you. ठीक है. Now we'll be moving to the second half of the session, which is most important than the first half. Sir, which center to choose? How many of you have this issue? Sir, कितने लोगों को ये issue है? How many of you have this issue? If you have this problem, just write yes in a chat box. If you have this, December 21 का कुछ कुछ शो हो रहा है. I know this, right? I've already told you out. ICAI ने सिस्टम को अपडेट नहीं किया है. That is why we need to ensure that it's gonna be updated. CV not uploading in a PDF format. फाइल को compress करो. Try to ensure that the below 100 KB. ठीक है, अगर CV अपलोड नहीं हो रहा है, try to compress it out and upload it below. Try to ensure that it's below 100 KB. ठीक है. December 21 शो हो रहा है. I know this, है ना. CV needs to be uploaded in PDF format. The answer is yes. है ना. ट्राई टू कंप्रेस योर CV एंड देन ट्राई टू अपलोड इट. कंप्रेस करके मेरे दोस्त अपलोड करने का कोशिश करो. बलप्रीत कह रहा है ये डिक्लेरेशन December 21 का आ रहा है तो कैसे भरे. अगेन आई डोंट नो, बट आई ट्राई टू कनेक्ट विद समवन इन ICAI एंड इन्फॉर्म देम कि दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, राइट. तो गेट इट सॉर्टेड. शुड आई वेट फॉर द फॉर्म टू अपडेट? अगेन आई हैव टोल्ड यू आउट, ट्राई टू फिल इट बिफोर 30th. दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट यू टू डू. अब वेट करना कि नहीं करना, ICAI के साइड से नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, I don't know, but I'll try to communicate on our Telegram group. I'll try to speak to someone in ICAI so that it's gonna be sorted. ठीक है. Yes, एक अलग से सेशन लूंगा मेंबरशिप फॉर्म के लिए कैसे भरा जाता है, तो I'll be happy to help you out. Next, but before I move to this very important update, I want you to do is that CA Monk is doing and running its placement program for all our students by the name of SAMBHAV. हमारा एक सपना है कि आपका जो सपना है वो सब साकार करें. इसके लिए वी आर रनिंग अ संभव प्रोग्राम. इट्स अ one application, 5,000 plus openings and your dream company. Lot of corporates, lot of big companies, lot of big fours are working with us for this placement program. सर स्टार्ट हो गया क्या? हाँ सर, व्हाट आई नीड टू डू, टेल मी. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू गेट प्लेस्ड इनटू द ड्रीम कंपनी. दिस इज समथिंग व्हिच यू आर गोना बी गेटिंग क्लोजर टू योर ड्रीम कंपनीज आउट. लॉट ऑफ हायरिंग पार्टनर्स आर देयर. यू कैन अगेन सी द लिस्ट ऑफ कंपनीज व्हिच आर देयर. सर मेरे को बताओ क्या करना है. वेरी सिंपल. वंस यू गो टू द संभव, सर कैन यू प्लीज शेयर मी द लिंक ऑफ संभव? द आंसर इज यस. आई विल इन फैक्ट एंश्योर दैट द पीपल आर गोना बी गेटिंग ऑल द फाइल्स ओवर अ संभव. राइट, इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर, रियली वेरी हैप्पी टू सी दिस. लाइव चैट पे भी मैं संभव का लिंक शेयर कर देता हूं सो दैट पीपल कैन रजिस्टर इट नाउ इटसेल्फ. ठीक है, पीपल कैन रजिस्टर इट नाउ इटसेल्फ. See what you're going to be doing. Once you go to Sambhav, click on continue. The time you click on continue, right, you will be able to see a lot of things. First, you will be able to see what Sambhav is. You will be able to see the process of Sambhav. Next, you can definitely refer your friends. Some of the important updates related to our WhatsApp group and this are going to be shared with you. Next is the registration form. Very important. Once you register for Sambhav, please fill the registration form. I repeat, please fill the registration form. What does that include? It includes a Google form, which is going to be asking for some of your details, your resume, and all those details which are needed, area of interest, कौन से आप domain में जाना चाहते हो. And after that is done, we are going to be filtering your profile based on company's requirement, and you will start getting a call from our side. Okay. Now, one more also important update. We have installed a bot for a first level of screening, right? So many times you might get a call from a bot. Ki, are you interested for this, right?
If yes, press 1. If no, press 2. ठीक है, तो अगर बॉट से कॉल आएगा, there are chances that it's a CMONG team which has been calling you. ठीक है, I think there was also a wake up call before the session for the candidates, those who have registered for the session, right? You must be like, oh my god, this is cool, right? Anmol का आया and मुझे like, okay, हाँ मुझे आया था, right? I hope you got the call. Yes, no, yes, no, yes, right? I think most of you got it. Those who are registered Yes, for the same. I got the call. Got it. क्या बोली दीदी ने कॉल पे? मतलब I called the people as दीदी there. हाँ, बताओ. What was the call about? It was, I think, for just to attend the session, right? Yes, it was just a gentle reminder. Gentle reminder, right? So I hope you can just save that number. That is something which is there. Please do not spam it out because it's most important for you guys for interviews. Next, after that is done, some of the experience guys के लिए भी हमने डाला है. Some of the videos we are trying to put it for you guys. Interview preparation materials we are trying to put it down, right? You can just refer the same. And we had some pre-placement talks for Anand Rathi as well. So I have uploaded the details of the same. Okay. I will give you a 30 seconds of time to every one of you to just at least create the account over a SAMBHAV. I will give you 30 seconds of time. And I'll give every one of you to 30 seconds of time to create an account over SAMBHAV. जिन्होंने नहीं किया है कर लो, जिन्होंने कर लिया है बहुत बढ़िया. ठीक है, मैंने फिर से लिंक शेयर कर दिया है. Once you have done with this, once you have created an account, just write done in the chat box. ठीक है, once you have done with this, just write done in the chat box. YouTube की जनता, मेरे दोस्त भाई लोग, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और ऑल्सो आई हैव शेयर्ड द लिंक एंड पिन्ड द लिंक फॉर अ संभव. ठीक है, फटाफट आप जाके संभव के लिए रजिस्टर कर लीजिए, राइट? संभव के लिए रजिस्टर कर लीजिए प्लीज मेरे दोस्त भाइयों, रजिस्टर करो ना. गॉट इट. Once you have done with this, just write done in a chat box. Once you are done with this, just write done in a chat box. कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा बिकॉज आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा. यू जस्ट नीड टू क्रिएट एन अकाउंट, दैट्स इट. ऑलरेडी डन इन अ मॉर्निंग. ग्रेट 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 ग्रेट. मीनवाइल कोई डाउट्स होंगे तो वो भी डालते जाओ चैट बॉक्स में. आई विल बी एबल टू सी दिस आउट. सर्टिफिकेट लगेगा? द आंसर इज यस. आई हैव अप्लाइड यस्टरडे. तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो हेल्पफुल रहेगा. कैन वी मेंशन मोर देन वन प्रेफर्ड लोकेशन? द आंसर इज नो. जितना उसमें लिखा हुआ है वो डालना है. हाँ, साइनिंग डिटेल्स इनवैलिड आ रहा है तो मैंने बताया आपको कि आपको मेल करना है और कॉल करना है, विच इज देयर. सर आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फॉर संभव व्हेन आई वाज ड्राइविंग बट आई कॉल्ड बैक, नो आंसर, है ना? तो ठीक है, आपको फिर से कॉल आ जाएगा जतिन, डोंट वरी, है ना? आई वांट टू ज्वाइन जीआर बैच फ्रॉम टुडे. ग्रेट, आप ज्वाइन कर सकते हो मुदित. आज सुबह मॉर्निंग में बैच हुई थी. जो आज का सेशन है वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना बस. नहीं तो नेक्स्ट बैच इज गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of August. इवनिंग में स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट बैच. ठीक है, गॉट इट. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट विच इज देयर. Got it. Once you are done with this, sir, what is GIR? Okay, got it. So मैं एक और अपडेट बता देता हूँ. कुछ लोग पूछ रहे हैं, सर what is GIR all about? Right. तो CMONC has been in a training space for almost 2.5 years, and we have been helping the students to get placed to their dream companies out. So we have our training workshop by the name of Getting Interview Ready. It's a 7 days rigorous training program which is a live training, है ना? रिकॉर्डेड नहीं है. यूट्यूब से आप रैंडम वीडियोस पढ़ के आप देखोगे, आपको कुछ हेल्प नहीं होता है. बिकॉज नो वन इज गोना बी देयर टू गाइड यू कि भाई रेज्यूम में कैसे आपको चीजें लिखनी है. नो वन इज गोना बी हेल्पिंग यू टू टेल यू कि भाई इस तरीके से इंटरव्यू में बोलना है. नो वन इज गोना बी सिटिंग विद यू टू टेल दैट कि भाई हाउ दिस थिंग्स आर गोना बी देयर. In this rigorous 7 days workshop, we are going to be helping you right from everything needed from interview preparations, from resume building, mock interviews, group discussion, domain specific preparation, company specific preparation, and जो भी आपको interview related problems है, issues है, are solved in a Getting Interview Ready workshop. ठीक है, we have been completed 3 batches before this, right? We have been running our 2 batches currently, which is batch number 26, which is a morning batch, and 25 evening batch जो चल रही है अभी. Next batch is starting from 1st of August. You can see the list of batches which is there. 26th को जो हमारा बैच है, जो आज चालू हुआ है, मॉर्निंग बैच. इफ यू फील लाइक कि सर मेरे को मिस नहीं करना है, आई वांट टू इंश्योर दैट आई प्रिपेयर माई सेल्फ, यू कैन रजिस्टर फॉर द 25th का बैच. आई विल इंश्योर दैट कि कल मॉर्निंग से आप सेशन में आ जाओ. आज का जो मिस किया उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट बैच 27th बैच विच इज देयर इज गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of August. शाम का टाइमिंग है 7 to 10. 28th बैच अगेन 8th of August से चालू हो रहा है, विच इज अगेन फ्रॉम 7 to 10. सर इसमें क्या होगा? सर समझा दो एक बार करिकुलम. Curriculum is very rigorous. Day 1, resume writing, कैसे resume बनाना, how to apply off campus, how to write a cold emails, how to build a cover letter. So what is cover letter? I'll explain there. But is the most important part which is needed for interview preparations. Second,
group discussions. Very important. A lot of companies like Vedanta, Hero MotoCorp, Genpact are going to be conducting a group discussions. I need to prepare for the same. Third, we'll be also doing a group discussion practice with our mentors. You'll be allocated the mentor for your journey. Fourth, personal interview भी आपके लिए सिखाया जाएगा. Basic HR questions, how to answer them. With this, you'll be also teaching you for a technical sessions. After that is done, we are going to be teaching you how to build a profile on LinkedIn and ensure that you can apply off campus very well. After that is done, you'll be also allocated a mentor for a personal feedback and one-on-one group discussion and PI session. Sir, with this, we'll be also helping you out for a live assignments, which is a capstone project. जो भी आपको डोमेन में जाना है उसका आपको लाइव असाइनमेंट मिलेगा, उसका आप असाइनमेंट सॉल्व करो. इवन इफ यू हैव डन योर डमी आर्टिकलशिप, विल बी गेटिंग द असाइनमेंट्स. दैट थ्रू दैट असाइनमेंट यू विल बी एबल टू जस्टिफाई समथिंग इन योर रिज्यूम. We'll also working on your communication skills and also the company specific preparations once the ICAI placement starts. ठीक है, तो this is there. And again, lifetime placement assistance, और आपको मेरे साथ daily interact करने का मौका मिलता है. All the doubt solving which is there. ठीक है, you can see the feedback out, you can just see that what all companies are there, and also will help you out with some of the premium jobs जो भी placements में आती है. Will also ensure that कि आपको थोड़ा फटाफट उस jobs के लिए prepare करवा पाए. ठीक है, so this is what our training workshop is all about. It's starting from 1st of August. If you feel like कि सर मुझे अभी register करना है आज वाली बैच में, you can join it out 25th July से. आज से ही सुबह चालू हुई है, which is there. You can join from tomorrow. आज का बस recording देख लेना. अगर सर मेरे को ये भी नहीं करना है तो अगली बैच में आप आ जाना. आज for day 1 session you attend on 1st of August. Remaining session you can watch through here. ठीक है, तो this is what our GIR is all about. It's a rigorous training program. Live है, recorded नहीं है. Live में मजा आता है भाई. आप कभी live करके देखो. Trust me, you'll enjoy this. ठीक है, नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट थिंग विच आई वांट यू टू अपडेट इज mentorship.cmong.com. इसके साथ साथ जो GIR में है आपको पर्सनल मेंटर भी मिलते हैं थ्रू आवर मेंटरशिप वेबसाइट एंड इट्स अंडर डेवलपमेंट. वी आर वर्किंग ब्रिंगिंग लॉट ऑफ मेंटर्स एवरी डे. Name the company, we have people out there. Name the company, we have mentors out there. So what we are trying to do, we are onboarding the mentors from every different company every day. और उनके साथ आपको लाइव इंटरेक्ट करने मिलता है through this platform. And also requesting you to register for our upcoming session for our Wipro, right? Which is gonna be tomorrow. Right, tomorrow 5 to 6, where they will tell you out about the cohorts program and also they might help you out get closer to your dream company. तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, just go to mentorship.cmong.com, just register yourself so that it's gonna be helping you out. हाँ सर, I have registered but yes you can attend. नेहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो. Right, mentorship.cmong.com जाके रजिस्टर कर लो for the upcoming events. बहुत सारे कंपनीज का प्री प्लेसमेंट टॉक करवाएंगे हम, which is gonna be helping you out. Got it. Next, CTC and two important discussion which we are going to be discussing now is that which location to choose and how to decide what should be the CTC. Now, I have done some good work in my life and that is something which I want you to share with all of you. Oh my God, sir, what does this? कुछ समझा दो sir. Great. I need to pay attention now. And Moon is like, I will pay 100% attention now. Got it. Yes. So this is a list of year-on-year campus-wise where I have tried to collate some of the important details, which is I've gonna be shared you the list of companies which came to the center-wise in December 21, which was our top hiring companies, which is there. Sir, can you please also show the top hiring companies from ICAI website? The answer is yes. Just let me show you a second. ICAI campus placement. The time you go here, click on this, and you click on the brochure. Right here, you will be able to see the top companies which are there who used to hire the most. ठीक है, these are the top companies जो सबसे ज्यादा hiring करती है. PW is PwC India and PwC SDC, ICICI Bank, Infosys. This is our data from 2017 to 2022. Okay, Infosys, BSR is your KPMG, Accenture, SRB is your EY, TCS, Deloitte, Genpact, and Barclays. Okay, these are the top companies which are hiring. And this is the companies with a higher number of CTC. ठीक है, Deutsche Bank में last time 2 vacancies आई थी, and the good part is दोनों हमारे GR के students थे. I was like bang on, मजा आ गया भाई. ठीक है, तो that is there. PFCs which is there, Power Finance Corporation, Vedanta, BPCL, Vodafone Idea, but इन सब की vacancies बहुत कम रहती है. You need to prepare for it. You need to ensure that if you are going to be shortlisted, you are going to be clearing the interviews for the same, and that involves a rigorous interview practice. ठीक है सर, ये कवर होगा क्या सेशन में? हाँ, हम GR में सब कुछ कवर करते हैं, आप टेंशन ना लो. सर नेक्स्ट इस पे बताओ सर. So this is a list of companies which have given the hiring packages, average packages by the companies out. So based on this, can I decide what my average or minimum CTC can be? The answer is yes. Point number 1. Sir, but मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना करूं. I have given you the range which is there.
Now, if you are have scored good marks, if you are a ranker, you can also go for the companies with a higher CTC. You can just think on, keep, I'll put a higher range as compared to the lower range which is there. I've collated the list of companies which gave a higher package. Got it? Now, second thing what I've done is that I have tried to collated the center wise comparison, right? Center wise comparison कि कौन से center में कौन से year में कितनी companies आई थी, ठीक है? कौन से center में कौन से year में कितनी companies आई थी. This is a frequency table which is the center wise. But I'm not saying कि कोई center अच्छा है बुरा है. All the centers are good. It's purely depending on which center you feel like, है ना? Sir, say for example, if I choose Ahmedabad location, whether I'll be getting a companies in Ahmedabad only, the chances are very high, but they might ask you to relocate. Dekho, I am repeating, they might. I'll give you my example. I set for the Mumbai campus, right? I set for a Mumbai campus. I selected in a Bangalore location. तो मैं Bangalore shift हुआ था उड़ान के लिए. But there are chances that कि अगर आपको same location चाहिए तो ICAI ने have given you a tab. I hope you remember this. There they have given you that I am only looking for a job in a particular location. तो आप वहां पे फिर choose कर लो. ठीक है? That is something which is there. If you want to take a screenshot of the same, you can take the screenshot of the same. और if you want, I'll upload this file over a संभव प्रोग्राम. संभव में ये फाइल आपको मिल जाएगी. ठीक है? संभव में ये आपको फाइल मिल जाएगी. बाद में मत बोलना कि सर कहां मिलेगी. संभव प्रोग्राम, right? It's going to be uploaded there. Next, some of the list of small centers, the company wise. Sir, but why there are a lot of companies in December 21? Because December 21 में ICAI ने 2 rounds of a campus किए थे. ठीक है? 2 rounds of a campus because they wanted a maximum placement. See, ICAI literally cares for you guys. That is something which is great, right? तो ICAI ने 2 राउंड ऑफ कैंपस करवाए थे. इट्स कूल. जिनको जॉब नहीं लगी आप फिर से आओ कैंपस में. विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट. तो दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच आर हाई इन अ कैंपस प्लेसमेंट. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच यू विल लव. सर कैन यू प्लीज टेल मी कि दिसंबर 21 में किस कंपनी ने कितनी वैकेंसीज दी थी, कौन से रोल के लिए दी थी और क्या सीटीसी दी थी. आई हैव ट्राइड टू कोलेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल व्हिच इज देयर. अगेन आई विल अपलोड दिस ओवर द संभव प्रोग्राम टैब. ठीक है? तो इसलिए आपको संभव में रजिस्टर भी करना है और जॉब के लिए अप्लाई भी करना है. सर मेरे को दिखा दो सर. अच्छा, यू कैन प्ले विद दिस फाइल एनी टाइम यू वांट, राइट? ऑलरेडी गोना बी अपलोडेड इन द संभव प्रोग्राम. जस्ट रीड इट आउट, जस्ट सी दैट व्हाट हैव बीन डिटेल्स हैव बीन गिवन एंड बेस्ड ऑन दैट कैन आई डिराइव सम ऑफ माय एक्सपेक्टेशन एंड थॉट प्रोसेस बेस्ड ऑन कि मेरे को कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, मेरे को किस लोकेशन को चूज करना है एंड what can be my average CTC of a range which you want to think, right? So that is something which is this file is going to be helping you to give some of the hint. कोई सही और गलत आंसर नहीं है इस दुनिया में. Sir, can you please tell me which companies are going to be coming to the ICAI campus? Even ICAI don't know this because the last 25th 26th is the last day for a company's registration. तो ICAI को भी 26th को पता पड़ेगा कि कौन कौन सी companies are going to be coming. ठीक है? And they might issue a list around 28, 29, 30 or first or second or third, right? No one knows this. So that is why you cannot wait for such a long time. So you need to decide when you're supposed to fill the form, but try to fill this out before this, try to fill the form before 30th. That is point number 1. Point number 2, fill your form whenever you are sitting with your calm mind. Gai gadbadi mein mat karna. Second. Third, there are chances that you'll get multiple errors, right? I've told you कहाँ error आ सकती है, how to solve those problems out. Number 4, संभव पर अभी upload कर दो सर. हाँ, I'll upload this after the session is done. Don't worry, Sanchit. Point number 4. After that is done, you can just write the email if you're facing an issue to ICAI. This is what the issue is. Point number 5. For the general queries which are there, I'll try to resolve it on a Telegram group. मुझे पता है कि कौन-कौन सी general queries है. Every time this queries comes, I'll try to put it over a Telegram group. Where to join a Telegram group? Just go to your Telegram, May 22 CA. Just join कर लो, वहां पे आपको सब कुछ अपडेट आ जाएगा. Next, sir. Next, which center to choose and which CTC to choose? I have given you the hint. I have given you the file. आपको डिसाइड करना है कौन सा सेंटर में जाना है. All the centers are good, but there are few things which you need to understand. Bangalore is a service center. मतलब ज्यादातर वहां पे सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है and lot of startups are there. तो Bangalore is city we known as a startup city. पुणे इज ऑटोमोटिव हब, आपको पता होना चाहिए, राइट? मुंबई में सी इट्स एवरी सेंटर हैज देयर ओन वेराइटी एंड टाइप ऑफ थिंग्स, राइट? नाउ कमिंग टू द थिंग्स, राइट, कि सर कंपटीशन कैसा रहेगा सेंटर वाइज, लोकेशन वाइज. देखो कंपटीशन सब जगह रहेगा, राइट? बट यू नीड टू एंश्योर दैट वेयर एवर यू आर सिटिंग फॉर इंटरव्यूज यू आर गोना बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम, right? Chennai may be a lot of companies come. Chennai maybe it's again a good manufacturing hub. A lot of companies come in Chennai. A lot of companies come in all the locations. Just you can see from the frequency table which is there. You know, now there can be chances that this might not be correct in the current attempt, attempt for the campus placement. But
आई हैव ट्राइड टू प्लॉट इट डाउन सो दैट एटलीस्ट यू कैन बिल्ड अ थॉट प्रोसेस. ठीक है, got it right. Now moving to the last part of session. What about Delhi? Every center I have mentioned this out, please do not worry. देखो, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन लक. कौन सी कंपनी आएगी आपको भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है, इंस्टीट्यूट को 26 को पता चलेगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, क्या वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगी? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता. वो कंपनी को आपको भी पता चलेगा 8 तारीख को, मुझे पता चलेगा 8 तारीख को, 8 ऑफ अगस्त, राइट. सर क्या मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगा अगर कंपनी ने शॉर्टलिस्ट की? तो हाँ, अगर आप प्रिपेयर करोगे ढंग से तो कर लोगे. वो चीज मैं बोल सकता हूं. व्हाट इज इन माय हैंड टू प्रिपेयर एंड क्रैक द इंटरव्यूज आउट. आई वांट यू टू वर्क ऑन द सेम एंड दैट इज व्हाई आई एम जस्ट ब्रॉट दिस प्रोग्राम आउट. अगर आपको ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है इट्स योर चॉइस, आई डोंट हैव अ इशू. हाउ मेनी सेंटर्स कैन बी सिलेक्टेड? 1 स्मॉल सेंटर, 1 बिग सेंटर व्हिच यू आर सपोज्ड टू चूज. गॉट इट. आई होप पीपल हैव एंजॉयड द सेशन. बहुत ज्यादा गहरा सेशन हो गया, मजा आया कि नहीं बताओ. इफ यू हैव एंजॉयड इट तो लिख दो यार, प्लीज लिख दो, ऐसा मत करो. Right? If you have enjoyed it, just write enjoyed in a chat box. I will be happy to see this out. मेरे एनर्जी हो जाएगी डबल और आपके लिए और अच्छे सेशन लेके आएंगे, राइट? और अच्छे सेशन लेके आएंगे. एंजॉयड सर, एंजॉयड, मजा आ भी गयो. अच्छा चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. पीपल फ्रॉम यूट्यूब, आप भी जरा लिख दीजिए यार, 2 शब्द लिख दीजिए. इफ यू हैव एंजॉयड इट जस्ट राइट एंजॉयड इन अ चैट बॉक्स. झकास, है ना, झकास हो गया. एंजॉयड सर, लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. अभी तो आप हमसे मिले हो, अभी आओ हमारे सेशन में, रोज आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे हम, राइट. अगर आपने एंजॉय किया तो लिख दो 2 शब्द यार, हम भी पढ़ ले, हम भी थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल ला ले. आप भी सीए बन गए हो तो यार हमें मिठाई मिठाई तो खिलाए नहीं, बट हम यही देख के खा लेते हैं मिठाई, यही हमारे लिए मिठाई है. हाउ टू एनरोल फॉर जीआईआर, राइट. हाँ, अब जीआईआर के लिए जाना है, एनरोल करना है तो cmonk.com पे जाओ, राइट. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोसेस बनाया हमने. जस्ट गो टू cmonk.com. द टाइम यू गो टू cmonk.com, जस्ट क्लिक हियर, है ना, विजिट नाउ. द टाइम यू विजिट हियर, यहाँ पे आपका पेज ओपन हो जाएगा. और you can just go to the placement tab, live workshop, you'll be able to open this out. ठीक है, just go to cmonk.com, visit now. The time you visit there, आपको पेज ओपन हो जाएगा. Decide the workshop you want, just enroll it. ठीक है, trust me guys, है ना. There has been a case, ये हम लोग इस डोमेन में have been working for almost 2.5 years, right? And I can say that अगर इस वर्कशॉप करने के बाद आपको एक भी दिन ऐसा लगेगा कि सर कुछ भी सीखा नहीं, आप मेरे को बोल सकते हो, राइट, कि सर मजा नहीं आया. देयर हैव बीन केसेस वेयर पीपल आर लाइक कि सर मजा आ गया सर, आप छोड़ के नहीं जाना इस वर्कशॉप को और चलने दो, राइट. तो दैट इज देयर. यस, गॉट इट. नाउ एनी क्वेरीज इन अ चैट बॉक्स, विल ओपन द फोरम फॉर अ डाउट सेशन. एंजॉयड सर, योगेश सीए, योगेश भाई ने बोला मजा आ भी गयो, चलो ग्रेट. एनी क्वेरीज इन अ चैट बॉक्स, आई एम लुकिंग फॉर अ चैट बॉक्स, आई एम लुकिंग टू द चैट बॉक्स. प्लीज चैट बॉक्स पे प्लीज डाल दो क्वेश्चंस, राइट. सर संभव से कॉल आया बट उठाया नहीं. अच्छा कोई बात नहीं, उठा लेना. सर बस आप एड्रेस भेज दो, आपको पार्टी दे दूंगा, थैंक यू. सर कैन यू प्लीज कीप अ सेशन ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर अ मेंबरशिप. ओके ठीक है, मैं सेशन ले लूंगा, कोई बात नहीं. सर आई एम ट्राइंग टू रजिस्टर फॉर दिस बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू लॉग इन इट्स शोइंग इनवैलिड क्रेडेंशियल, प्लीज मेल टू द ICAI. मेंबरशिप एक्नॉलेज नंबर नॉट एंटर, नॉट अवेलेबल टू एंटर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आ जाएगा तब डाल देना. आई थिंक इट टेक 2-3 days to this. So I have registered for 2 form, both are BSR and KPMG. Vote to mention, right? ब्रैकेट में लिख देना कि एसोसिएट ऑफ दिस. सर संभव से कॉल आया था बट उन्होंने अभी तक इंटरव्यू शेड्यूल नहीं किया. हो जाएगा निकिता, डोंट वरी, एंड इट टेक्स टाइम टू प्रोसेस दिस आउट, है ना, थोड़ा सा टाइम लो प्लीज. सर पासपोर्ट मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग अब्रॉड, द आंसर इज नो, बट कोशिश करो कि हो सकता है तो डाल दो, बट ठीक है, अदरवाइज यू कैन पुट इट नो इफ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट. माय आर्टिकलशिप इज स्टिल पेंडिंग, व्हाट टू डू, तो यू कैन राइट द एंड डेट व्हिच इज देयर. सर in my campus login my many drop downs are not opening. Yo, ठीक है, try to clear your browsing history and try to fill this out. Sir can you please share your number, you can connect me on a telegram, है ना, telegram group, and you can tag me out or you can pin me on telegram. Sir I gave one group and in first attempt and second group in second attempt. नहीं, मैं attempt का तो मैं counting नहीं बताऊंगा, because मेरे को पता है attempt का counting मैंने चालू किया तो सब वही डाउट पूछेंगे, है ना, which is a dangerous doubt for me. I've given you the hint, I've told you how you're supposed to count. ठीक है सर, वर्चुअल इंटरव्यू होंगे क्या इस टाइम? यस मोहन, वर्चुअल इंटरव्यूज होंगे. यस यस. शिखा शर्मा बोल रही है एंजॉयड द सेशन, थैंक यू. एंजॉयड द सेशन. What to put in a roll number section of ICAI placement? Yo, your CA final roll number. Do we have to pay the membership fees on an annual basis? The answer is yes. Sir, in my login many drop downs I have told you out. सर 3 फॉर्म्स से आर्टिकलशिप किया है बट 2 बताएंगे तो चलेगा क्या? द आंसर इज नो. सर ICAI में IOCL में रेफरेंस चाहिए
अच्छा ये है क्या, चलता है क्या? अयो, क्या क्या पूछ रहे हो? ठीक है, रेफरेंस तो पूरी दुनिया में चलता है, ये तो भारत है यार, राइट, विच इज देयर। मॉक ऑल्सो वर्चुअल इंटरव्यू, मॉक ऑल्सो वर्चुअल इंटरव्यू सर, द आंसर इज यस। सर एसएसपी टिकट रेज नहीं हो रहा है, व्हाट टू डू? ओ माय गॉड। ठीक है, मतलब मुझे थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि मैं आईसीआई से थोड़े से पैसे ले लूं, है ना, ये सब क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, बिकॉज आईसीआई के डाउट्स मुझे ज्यादा आने वाले हैं। Please give a hint on selecting a small sentence. I can you can use the same file just for a reference. Sir, let's take the doubt from YouTube friends. है ना, YouTube के कुछ दोस्तों से doubts लेते हैं. Sahil is saying, sir, what to put a roll number in ICA placement? CA final, Sahil. Diksha Lohia is saying, sir, I am pursuing BCom from IGNU. I haven't given the BCom exams yet to be written in current centers. ठीक है, तो आप उसको फिर इग्नोर कर दो अगर नहीं हुआ है तो आपका। सर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मेल आया, वो कंपलसरी है क्या अटेंड करना? आइडियली आई थिंक सो, इस बार कंपलसरी नहीं होना चाहिए, बट लेट मी जस्ट कंफर्म एंड अपडेट टू यू गाइस। सर इफ वर्चुअल इंटरव्यू होना होना है तो सेंटर मैटर क्यों करेगा? मोहन, योर क्वेश्चन इज 100% राइट, बट क्या होता है कि आईसीआई अपना पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आई थिंक दे विल मूव टू द फिजिकल सेंटर आउट और फिजिकल कैंपस। तो इस वजह से फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू ऑल दिस। तो जो पुरानी प्रथा चल रही है उसको चलने दो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई फॉर आनंद राठी जॉब? ऋषभ, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट आ जाएगा, जस्ट स्टे कनेक्टेड। विच सेंटर्स आर सिलेक्टेड फॉर कैंपस? आई थिंक आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर लो, आपको हेल्प हो जाएगा। सर वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेफर्ड सिटी से हो जाएगा क्या? नहीं, तो आपको कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। मेरे दोस्त कौन है ये? सिमर नहीं, वर्क फ्रॉम होम का कौन था? भूमि, यस भूमि, आपको स्पेसिफिकली वो देखना पड़ेगा विच इज देयर। Bhumi from YouTube. Yes. Sahil, Shubham is saying when submit ICAI form confirmation mail not received. हाँ, तो वही मैं बोला कि confirmation mail नहीं आता है, which is there. Sir, registration on संभव but confirmation mail नहीं आया। ऋषभ आ जाएगा, nothing to worry, right? Ahmedabad center is good, right? Ahmedabad center is good. You can just see that what all companies are there and you can just check it out. Nidhi is saying enjoyed the session. Thank you, Nidhi. Right. Sir, इंटरव्यू कब से स्टार्ट होंगे? कैंपस के 22 से स्टार्ट होंगे। Got it. सर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? बेटा GIR वर्कशॉप cmonk.com, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगी हुई है। cmonk पे जाओ, आपको प्लेसमेंट टैब में जाना है, लाइव वर्कशॉप चेक कर लो, वहां पे आपको हेल्प हो जाएगा। सर वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेफर्ड सिटी बोल दिया मैंने। सर थॉट्स अबाउट अहमदाबाद सेंटर, अगेन मैं इतना स्पेसिफिक नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज क्या है कि फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, बिकॉज प्लीज डू अंडरस्टैंड, है ना, पीपल आर कीपिंग आई ऑन मी नाउअडेज, तो आई नीड टू बी बिट कॉशियस विद ऑल दिस, स्पेशली एट पब्लिक फोरम्स। ओके, एनी डाउट्स ऑन यूट्यूब चैट? यूट्यूब चैट पे कुछ डाउट्स के लिए मैं रुक कर रहा हूँ, फिर मैं जूम चैट पे मूव करूंगा। फटाफट डाल दो यार यूट्यूब चैट पे जाओ डाउट्स। कैन वी अपडेट आवर रेज्यूम ऑन संभव पोर्टल? द आंसर इज यस, अभी आप फिल कर दो, बाद में एक और हम कोशिश करेंगे कि अपडेटेड फॉर्म के लिए आपको ये भेज दें। Want to do outside India from, sir what to do if outside India from 14 to 28? हाँ, तो 14 to 28 मेरे दोस्त को इंटरव्यू तो है नहीं ना हर्ष, तो आप टेंशन मत लो, है ना। हर्ष घूम रहा है भाई, दुबई दुबई, पैसे वाला पार्टी है, देख लो, दोस्त बना लो हर्ष को। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ, एनी कूपन फॉर GIR? नमन भाई सो सॉरी, नो कूपन कोड, ऑलरेडी एट डिस्काउंटिंग प्राइसेस। सर CA इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहिए क्या? अगर मिलता है तो जाओ, इफ यू फील है कि आपको इंटरेस्ट है, गो फॉर इट, ठीक है। साक्षी, राइट, कैन आई रजिस्टर फॉर GIR विच इज स्टार्टिंग टुडे? द आंसर इज यस। बस सुबह का जो सेशन हुआ था उसका वीडियो देख के आना कल, है ना। सर आई वांट टू मेंशन करंट पार्टनर्स एंड आर्टिकलशिप, मेंशन कर दो। व्हाट टू मेंशन? आस्क देम कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं। ओके 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 ओके, गेट इट। सर वांट टू मेंशन करंट पार्टनर्स हो गया। सर एडवांस, सर एडवांस इट रहती है, ओल्ड कन्वर्जन टू न्यू कन्वर्जन, गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम ICAI दैट आई कैन फाइल द कैंपस GMTS2 कंप्लीट है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। JP मॉर्गन एंड GS गोल्डमैन के लिए कैसे अप्लाई करें? नमन, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डमैन के लिए और JP मॉर्गन के लिए उनका वेबसाइट ट्रैक करो। JP मॉर्गन की मैंने वैकेंसी ऑलरेडी डाल थी एक बार, और बताई भी थी स्टूडेंट्स को कि कैसे आपको वेबसाइट पे चेक करना है। आप मेरे पूरे सेशन देखो, हाउ टू अप्लाई ऑफ कैंपस वाला सेशन देखो, बड़ा शानदार सेशन है मेरे दोस्तों भाइयों, चेक कर लेना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत हेल्पफुल रहेगा, चेक कर लेना हाउ टू अप्लाई ऑफ कैंपस। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, डेली ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जॉब प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। तो सोचो मत, सब्सक्राइब कर लो। नॉट एबल टू लॉग इन, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, हाउ टू, नो लॉग, नो फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन। सिमरन सो सॉरी, ICAI का पोर्टल यार, मेरा पोर्टल नहीं है, तो मुझे नहीं पता आप क्यों ऐसा इशू आ रहा है, बट आप मेल करके रख दो। ICAI रोल नंबर नॉट अवेलेबल, अरे मेरे दोस्त, मेरे राहुल भाई, CA फाइनल का रोल नंबर डालना है, ठीक है। आपको CA फाइनल का तो रोल नंबर मिला होगा ना, नहीं मिला होगा ऐसा मत बोलना, ठीक है। यस,
नंबर ऑफ पार्टनर्स गलत मेंशन कर दिया तो एनी प्रॉब्लम होगा क्या? द आंसर इज यस। नमन प्लीज समझो यार, लेट्स बी प्रोफेशनल, है ना? बिकॉज एक बार इंटरव्यूअर को पता चला कि भाई आपने गलत पार्टनर्स मेंशन किए हैं, राइट, ही इज गोना बी डाउनग्रेडिंग योर प्रोफाइल और दे माइट ब्लैकलिस्ट यू आउट एज वेल. Sir, pre-placement job. So what I preferred next campus drive. Any already pre-placement job. So हाँ, तो you can sit for next campus if you want, not an issue. है ना? सोल प्रोपराइटर तो कितने नंबर ऑफ पार्टनर होंगे? अच्छा सर, सोल प्रोपराइटर में तो नंबर ऑफ पार्टनर एक ही होगा. हाँ, तो एक ही होगा, अच्छी बात है. राहुल, मैंने आपका डाउट कवर कर लिया है. सर प्रेफर्ड सिटी चूज करे, लोकेशन बता दिया है. सर रजिस्टर्ड अंडर डिफरेंट फॉर्म, वर्कड अंडर डिफरेंट फॉर्म, व्हाट टू मेंशन? जहां पे रजिस्टर्ड थे मेरे वहीं पे दिखाना पड़ेगा. तुषार मेरे भाई, है ना? तो जहां पे रजिस्टर्ड थे वहीं पे दिखाना पड़ेगा. अगर चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो एसोसिएट और अफिलिएट ऑफ, है ना? आईओसीएल की वैकेंसीज कैसे पता चलेगी? आईओसीएल कैंपस प्लेसमेंट में आएगा, वहां से आपको पता चल जाएगी. निकिता, निकिता आपका तो रेफरेंस है यार, लगाओ फोन चाचा मामा को. ठीक है. आई हैव फिल्ड द बीकॉम आफ्टर आर्टिकलशिप बट डिडंट मेंशन एनी इंस्टीट्यूट, है ना? तो फिर अगेन आपको यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. डोंट नो द मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू बट संभव में रिक्वायर्ड कंपलसरी है. तो कोई बात नहीं, विनय, कोशिश करो, फाइंड आउट होता है, नहीं होता है तो फिर उसको ब्लैंक छोड़ दो या जीरो डाल दो. सर मैकेंजी की वैकेंसीज कैसे पता चलेगी, है ना? मैकेंजी जनरली चार्टर्ड्स को बहुत रेयर हायर करती है, ठीक है? तो दैट इज व्हिच इज देयर. गॉट इट. लास्ट फ्यू क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन लेंगे फिर क्लोज कर देंगे. यूट्यूब वालों के 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं. आई थिंक जूम के तो मैंने पूरे कवर कर लिए हैं, राइट? जूम के मैंने पूरे क्वेश्चंस कवर कर लिए. अगर कोई बचा है तो डाल दो. ग्रेजुएशन डिटेल्स आईसीआई में नहीं डाला तो क्या ऐड कर सकता हूँ? अगेन इट्स योर चॉइस, बट अगेन आई वुड से कि दोनों को पैरेलल रख सकते हो अगर चाहिए तो. सर द सेंटर्स विच विल सिलेक्ट विल बी फाइलिंग इन द फॉर्म विल बी गेट प्लेस्ड इन दैट सिटी ओनली, राइट? श्रद्धा का क्वेश्चन है. देखो, आइडियली टू सम एक्सटेंट यस, बट दे माइट आस्क यू. अगर आपको लोकेशन स्पेसिफिक इशू है तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो एचआर को बोल देना कि आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लोकेशन ओनली. गॉट इट. ग्रेट. सो आई थिंक ऑल द डाउट्स आर क्लियर, राइट? अभी आई थिंक क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. डोंट वरी, सभी सेंटर्स अच्छे हैं. लिस्ट ऑफ कंपनीज और लिस्ट ऑफ सेंटर्स विच केम ऑन अ प्रीवियस कैंपस प्लेसमेंट वो मैं डाल दूंगा संभव प्रोग्राम में. आप जाइए वहां पे देखिए, सब कुछ संभव में अपलोडेड है. ऑल्सो इंपॉर्टेंट अपडेट, सीएमओ का ऐप डाउनलोड कर लो सो दैट कुछ भी इंपॉर्टेंट फाइल अपडेट होती है तो आपके ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा. आप ऐसे घूमते नहीं फिरोगे इधर उधर, सर फाइल कब डलेगी, सर फाइल डली क्या, देखा नहीं सर, राइट? जस्ट डाउनलोड अ सीएमओ ऐप. वंस द फाइल इज अपलोडेड यू गेट अ नोटिफिकेशन. ठीक है? इससे अच्छी चीज क्या चाहिए? जस्ट गो टू प्ले स्टोर, जस्ट गो टू द iOS store, right, which is there. App Store पे जाओ, just download a CMonk app, give a 5-star rating, and just all the updates are there. Got it. Perfectly fine. I hope we will conclude the session. Whether we have to write the current number of partners or number of partners which were during the time of articleship, कुछ भी डाल सकते हो, right? You can also go with A or B, whichever is higher. ठीक है? सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए कोई टिप्स और वीडियो दे दो, एक सेशन ले लेंगे हम आईबी के लिए. एक और अपडेट जो आईबी में करने वाले हैं, आईबी के लिए जिसको भी जाना है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग योर फाइनेंशियल मॉडलिंग. ठीक है? फाइनेंशियल मॉडलिंग का भी मेरा लाइव क्लास आ रहा है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी आप स्टार्ट कर सकते हो. 2 अगस्त से हमारा बैच चालू हो रहा है फॉर लाइव फाइनेंशियल मॉडलिंग. इसका डिटेल करिकुलम आप यहाँ पे आके देख सकते हो. लाइव इंडस्ट्री परफॉर्म करेंगे, जो भी आपको कंपनी चाहिए उस कंपनी को उठा लो, उसके साथ हम लाइव उसका प्रोजेक्शन, वैल्यूएशन, सब कुछ बनाने वाले हैं. तो ये भी एक छोटा सा अपडेट है. 2 इंपॉर्टेंट टैब, प्लेसमेंट टैब एंड अपस्किलिंग टैब, दोनों टैब आप चेक कर लो. गॉट इट. So great guys, I think the session must be helpful to you guys. I've tried to give as much as possible so that you can understand the same, right? And before we conclude this out, I hope the session was helpful. अगर helpful था तो helpful लिख दो, फिर हम session को खत्म करते हैं. अगर session helpful था तो लिख दो ना यार, 2 शब्द helpful last time, है ना? चलो great, it was really helpful. Thank you Vaibhav, thank you Neha, thank you Kapil, right? Thank you everyone, helpful. Got it. थैंक यू सर. ओके हरप्रीत थैंक यू भाई. शुभम थैंक यू. अच्छा मेंबरशिप पर वीडियो बना दूंगा अगले अगले इसमें, आज या कल तक बनाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है? पूर्वा थैंक यू. राइट, थैंक यू गाइस, बाय बाय. जस्ट स्टे कनेक्टेड इन टेलीग्राम ग्रुप. और भी कोई हेल्प चाहिए जस्ट बताना टेलीग्राम ग्रुप में, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. फटाफट ये वीडियो अपने दोस्त भाइयों को शेयर कर दो ताकि वो भी ये गलतियां ना करे, कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म भरते वक्त गलतियां ना करे, एंड दे आर अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स आउट. बाय बाय गाइस, थैंक यू, स्टे सेफ एंड प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज एंड डू वॉट एवर इट टेक्स. जो भी करना पड़े करेंगे, साम दाम दंडभेद, बट इंटरव्यू क्रैक करके रहेंगे गाइस. ठीक है? चलो गाइस, बाय बाय, थैंक यू वंस अगेन.